Hello, good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Neetaji. Morning. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग रेखा भाभी। गुड मॉर्निंग उषा जी, कैसे हो? फाइन, आप बताइए। All हैप्पी fine. दिवाली। बढ़िया, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू ऑल। सबको दिवाली और की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आने वाले त्योहार, 5 दिन का त्योहार, धनतेरस, बरका चौदस, Now we should start now. गोवर्धन and दिवाली। Start. Yes, now we should start. Good morning, Sonal ji. Reena Good Shah morning. from District 304. Hanji, good morning. Good morning. We are just starting now. Morning. Good morning and inner wheel naman to all of you. Welcome to today's event. Welcome to today's event, Inspire Inclusion for Cancer Prevention. I am PDC Mrs. Sonal Bhatia, convener of today's event. Before we begin, I would like to thank our Association President, Mrs. Preeti Gurnani ji, our DC Anita Singh ji, and all DCs joining us today, and entire ICanCaRe team who have made this webinar possible. Now let's get started. It is an honor to have our chief guest here today, who is a true leader and an inspiration to many. I would like to invite our Association President, Mrs. Preeti Gurnani ji, for meeting call to order. So this special webinar on the National Cancer Day, National Webinar of All India is declared open. And thank you for making me part of this very significant proceedings, and that too on a very significant day. I wholeheartedly thank the district chairman Anita Singh and the webinar convener Sonal Bhatia. Sorry. With this, thank you, ma'am. With this, we proceed with our planned schedule. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. It is our honor to invite our association president and all the dignitaries present over here for digital lamp lighting, followed by inner wheel prayer. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं मित्र भाव के सत्यर्थ को हम सब में ही ईश्वर भर दो हम सब ही हैं तेरे बालक भूले ना ये इतना कर दो धर्म और संस्कृति भेदों का
हमें सदा ही ध्यान जीवन व्यर्थ ना जाए। प्रभु ये कृपा प्रदान करो। आए मदद की हो सत्य याद रहे, सेवा करने जहाँ कहीं भी आन पड़े, जीवन व्यर्थ ना जाए। प्रभु ये प्रदान करो। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाए, यह वर हमें प्रदान करो कि मानव जीवन व्यर्थ ना जाए। प्रभु ये कृपा प्रदान करो। Sonal ji, you are muted. Please unmute yourself. Sonal ji, unmute yourself, please. Yeah. I welcome our association president, Mrs. Preeti Gugnani ji. Our AP does not require an introduction. She is a well-recognized figure in our inner wheel. She is known for her wonderful administration and high achievements. Apart from this, she is a philanthropist and renders selfless services to society. She has molded the lives of many people and served people with her kindness. Let us now welcome the lady who does not need any introduction and known among all of us. I request you to please play the video of her introduction. Please change the slide. It is on the next slide. We often wonder about our journey of life. About herself, that's how she found Inner Wheel, and Inner Wheel found her. Born in Delhi, Preeti hails from a family of immensely humble in community service. She graduated from the Lady Irwin College for Women and married Sanjay Gugnani. Her husband navigated her towards Inner Wheel. With her intrinsic strength, she entered the doors of metamorphosis, joined Inner Wheel in 1999, and do whatever she could to make their lives better, qualitatively and financially. She has taken on the responsibility of educating girls from over 2,000 villages across India to give them a chance at a bigger, better, brighter future. She works with the villages, spends time with the women and girls of the villages to understand their challenges. She firmly believes that education is the most powerful tool to change the world, just like Nelson Mandela had said. As a voting delegate, she's attended 7 triennial conferences, 3 South Asian rallies, 2 IIW conventions. As the association vice president, she attended all the association executive and council meetings, plus all the zonal meets and national events. She also successfully runs the Scholars Rosary School, nurturing the small saplings during each day. Throughout her journey, the strongest pillars have been her daughter Ishita and her son-in-law, Shaurya Saran, hailing from a well-reputed exporter family from Moradabad. Preeti has been a recipient of countless awards.
to become the association president and national representative today, where she has a chance to make a greater impact. She has received numerous awards in Inner Wheel, in the District Assembly, Best ISO in 2002, Best Treasurer in 2003, Best Secretary in 2004, and Outstanding President. She also won the Best Treasurer Award by the Association Treasurer in 2015, when she was the District Treasurer. In the world outside, she's been awarded the Elite Woman of the Year 2018-19 by Elite Magazine India, the Best Woman Entrepreneur Award 2018 by Bridge Kala Kendra, the oldest cultural organization, and by Kalpataru Women's Organization, the Tejaswini Award 2018-19 by the National President of Association of Inner Wheel in India, Inspiring Woman Achiever of the Year Award for Education and Social Sector from ASSOCHAM by the Union Minister Mrs. Smriti Irani. She was also featured in Dainik Bhaskar's list of 10 revolutionary educationists of Haryana, titled Changing the World Through Education, and awarded the Renowned Educationist Award by Dainik Bhaskar for 3 consecutive years. She's received the Times Excellence 2021 honor for outstanding achievements in the fields of education and service by the Times Group India. She was also awarded with the C.V. Radhakrishnan Drona Award by the Haryana Association of Obstetricians and Gynecologists on the 5th of September 2021 on Teachers' Day. In addition to an award for being the exemplary COVID-19 pandemic edu leader by Education World in School of Eminence Awards. She has also been the recipient of the Exemplary Work and Lifetime Achievement Award for Social Service Endeavours by Rotary International District 3011, and IMT's Excellence in Education Award for the Educationist of the Year in 2022. She has a vision with the centennial goals of the organization to make India 100% literate by adopting and formulating the mission with IILM and Girl Power. She also envisions to empower Inner Wheel digitally by pledging zero paper usage. Preeti's transcendental journey has been extremely inspiring. There's a reason why women are compared to diamonds. Not because they are shiny and priceless, but because they're unbreakable. With that, I invite our own association president, Mrs. Preeti Gubnani ji, to address our esteemed gathering. I thank you so much for introducing me to the August audience today on the webinar. Can I request you to please remove the screen? District Chairman of District 310, the webinar convener Sonal Bhatia, all the Trailblazer District Chairmen who have taken up the initiative today to be part of the webinar and give their significant input. And most importantly, the ICAN support team and the eminent doctors with us. आप सभी इनर व्हील बहनें और सदस्याएं जो आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ी हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप इस बहुत ही बिजी टाइम जो कि दिवाली टाइम है, उस पर आप इतना सिग्निफिकेंट डे, जिस पर आपने इतना सिग्निफिकेंट मुद्दा आज उठाया है डिस्कशन का, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं बहनों, जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय कैंसर दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है
कि हमें कैंसर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए. National Cancer Day is significant because it brings attention to a disease that affects millions of people worldwide and encourages actions on the multiple fronts, from prevention and early detection and research and support for the cancer patients and their families. So there are many arenas where we need to work when we talk of cancer awareness. And we being the, true inner wheel members, when we think of serving people in the society, this is the need of the hour. कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और खासकर महिलाओं को इससे बचाव और इलाज के बारे में जागरूक होना चाहिए. आपके स्वास्थ्य को सावधानी से देखना यही हमारी जिम्मेदारी है. Being a true inner wheel member, as I said, we have got the instinct to protect ourselves and to protect our fellow inner wheel members and the society where we have more people to look after. एक महिला, जैसे कि हम कहते हैं, जब जागरूक होती है तो ना केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को जागरूक करती है. तो इस दिन को मनाकर हम सभी एक दूसरे के साथ आने का संकेत देते हैं और कैंसर के खिलाफ लड़ाई को एकजुट होते हुए स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं. By observing this day, friends, we symbolize our unity in the fight against cancer and endeavors to raise awareness about health. Together, we can make a difference in this ongoing battle against this life-threatening illness. By how there are few arenas where we need to work. I would like to focus those work arenas. That is raising awareness, first of all, which we are doing it today. And then second is promoting early detection. We can have camps in the various places in our communities for early detection. We can, after raising awareness, that is the second step to do, is have the early detection camps. And early detection is very crucial in improving cancer survival rates. On this day, organizations and healthcare professionals emphasize the significance of regular screenings and self-examinations to catch the cancer on an early stage, which is a more treatable stage. And that is how we are getting the support from the ICAN team. And we are very, very grateful to the entire ICAN team and the doctors who are going to make us aware today. And third is supporting the cancer patients. So this National Cancer Day is an opportunity to show the support and empathy for the cancer patients and their families. It encourages communities to come together and provide emotional, financial, and medical support to those who are affected by the cancer. And fourth is by advocating for research. The day also highlights the need for the continued cancer research to develop better treatments, early detection methods, and ultimately find cure for the cancer. It encourages the fundraising for cancer research initiatives also. And the fifth one I would like to talk about is the policy advocacy. So this National Cancer Day can be a platform for advocating for policies that support cancer prevention, which should be talked about in this webinar also, and access to the quality healthcare and increased funding for the cancer-related programs and the services. So friends, the sixth one I would like to talk about is reducing the stigma. Many cancer patients face social stigmas and discriminations. So this day aims in reducing the stigma associated with the cancer and encourages open conversations about the disease. As sometimes we tend to hide, okay, what is wrong with us? Okay, it's not to be told. So that awareness has to come in. And the seventh is forming a global unity. Cancer is a global health issue, and National Cancer Day fosters the global unity in the fight against cancer. It provides an opportunity for countries worldwide to collaborate on the cancer awareness and research efforts. So friends, अब हमें एकजुट होकर इस कैंसर अवेयरनेस और कैंसर फाइट के अगेंस्ट जितना भी काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए earnestly, every day, every minute. It's not only doing it on one single day. So let us stand together, support one another, and continue to promote
the health awareness to ensure a brighter and, cancer-free future for all of us. And I'm so grateful that on such a significant day, we are holding this awareness talk today on this webinar. I'm grateful to all of you once again. Thank you so much for making this happen today. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And thank you for being with us today here. Now I invite our DC Anita Singh ji for her welcome address. Thank you, सोनल जी. Today is Cancer Day. आज की इस कैंसर प्रिवेंशन पर आधारित नेशनल वेबिनार की चीफ गेस्ट हमारी डायनेमिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रीति गुगनानी जी, जो कि इतना अपने कीमती शेड्यूल में से समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई है. डिस्ट्रिक्ट 310 की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं. इस वेबिनार की इवेंट कन्वीनर पीटीसी सोनल भाटिया जी का हम स्वागत करते हैं और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव टीम जो कि हमेशा मेरे साथ तत्पर रहती है, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. आज हमारे बीच उपस्थित स्पीकर डॉक्टर पवन गुप्ता जी, डॉक्टर प्रवेश सिंह जी, डॉक्टर रीना आर कुमार जी, इंजीनियर ऋषभ अग्रवाल जी, आपको भी डिस्ट्रिक्ट 310 की ओर से इनरबी अभिवादन. साथ ही इस नेशनल वेबिनार की हमारी प्रमोटर, हमारी टीम डीसी उर्वशी मित्तल जी 301, डीसी बीना शाह जी 304, डीसी रीता शर्मा जी 307, डीसी सीमा कपूर जी 308, डीसी सुरिंदर कौर मोगा जी 309, डीसी संध्या गुप्ता जी 311, डीसी सुषमा अग्रवाल जी 312, डीसी वैशाली लोखंडवाल 317, डीसी रशिका बहादुर जी 326. आप सभी को भी मेरा प्यार भरा इनरवील अभिवादन. साथ ही हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पीडीसीज जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ. हमारे बीच उपस्थित क्लब प्रेसिडेंट्स, क्लब सेक्रेटरीज, सभी एग्जीक्यूटिव टीम्स और हमारे इनरवील मेंबर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन से आए सभी का आज की इस नेशनल वेबिनार में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Anita ji. Sonal and Anita ji, and can I just add one sentence, please? One more. Yes, Yeah, ma'am. thank you so much. Actually, I want to announce here, since it's, the topic is cancer awareness, I would like to announce here that we have taken up the initiative and, inaugurated a drive for cervical cancer vaccination. So with that drive, we are taking up a marathon also on the 10th of January on Inner Wheel Day, wherein all members are going to join in that marathon, which is going to be an awareness marathon, and taking up the drive initiative further. And, initiative is taken up at least one member, contributing for at least 10 vaccines for girls. And the government authorities have to be contacted for the lesser prices for the cancer vaccination. And we want to vaccinate as many as girls we can this year. And the website also has to write the number of girls you are vaccinating every day. You can mention it there so that you know what efforts every Inner Wheel member is making towards it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cancer is a disease that affects millions of people worldwide. It is a growing concern and every hour is at risk. It is a disease that does not discriminate based on age, gender, or race, but it is a problem that can be solved. So it is essential to understand how we can make a difference to win over cancer. We believe that with the right knowledge and collective efforts, we can prevent, manage, and eventually win over this disease. The theme of the event, Inspire Inclusion for Cancer Prevention, emphasizes the power of unity and knowledge sharing. If you have determination, you can become saviors of many lives. Together, let's inspire inclusion and work towards a world where cancer is preventable. We have a panel of expert doctors joining us today who will share their insight and experiences on this topic. Throughout the webinar, we encourage you to participate by submitting your questions and comments in the chat box.
Our doctors will do their best to address as many as possible. At the end of the webinar, we will have question and answer session where you will have the opportunity to ask our doctors any question you have. Without further ado, let's welcome our first speaker of today, Dr. Pravesh Singh ji. Very good morning, everyone. And thank you, Sonal ji. Am I audible, ma'am? Yeah, you are audible. I just want to ask you, ma'am, which is the most common occurring cancer these days? And what are the common cancers? Can you please put some light on these? First of all, I would like to thank Sonal ma'am, Innerville Association, ICanCaRe team, for inviting me for such a wonderful program. And it's indeed a great pleasure, privilege, and honor to be a part of this event. So coming to your question, Sonal ji, I would like to start with, as I today taken my class, I am taking the class on human values, and that topic was related to health. Means I was discussing with the student human values and health. So when I was starting this topic, so मैंने student से question पूछा. I asked the student because I start my class by asking some question to the students. And today is the Cancer Awareness Day. So my question was ki, why this kind of things like smoking, vaping and all is so socially acceptable. So different answers I got from the student. One of the student said that it is fashionable, and one student told me that majority of the student takes this just because of peer pressure and government sales for the tax purpose. There are many answers I got from the student, but the three prominent answer is the fashion, majority and government. When I look to their answer, fashion, why fashion? Because now today's youth wants to look cool. वो अपने आप को बहुत cool दिखाना चाहते हैं. तो cool दिखाने के चक्कर में they take such kind of things. They know that it is somewhere harmful, but coolness is more powerful thought that is overpowering them. And majority of people takes these kind of things. ये लेते हैं, सिगरेट्स लेते हैं, पीयर प्रेशर में लेते हैं. तो पीयर प्रेशर में ऑड वन आउट वाली फीलिंग आती है कि इतने सारे लोग ले रहे हैं और अगर हम नहीं लेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे. तो मैंने उनको जब ये टॉपिक मैं पढ़ा रही थी, सेल्फ एंड बॉडी, actually in human values we say that self and body are two different entities. Self alag hai, body alag hai, but as a human being the self and body are the coexistence, because without self there is no use of body, and without body there is no use of self. Actually body knows, हमें body को पता है कि उसको क्या चाहिए for proper functioning, and body gives the signal to the self कि ये ठीक नहीं है. If body feels some kind of pain or uneasiness or any ailment, initial signals actually given by the body to the self. Now the thing is that how much self is empowered, how the self is rightly equipped with the knowledge, proper knowledge self को है या नहीं है. जितनी ज्यादा नॉलेज सेल्फ को होगी वो उतना ही बॉडी को अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज कर पाएगा. सिंक्रोनाइज कर पाएगा मतलब अर्ली डिटेक्शन के केसेस में, लाइक कैंसर के केसेस में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे अर्ली सिग्नल हमें मिलते हैं, बट वी इग्नोर क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैंसर, अबाउट देयर हैबिट्स ऑफ टेकिंग टबैको एंड ऑल दैट. तो हमें एम्पावर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए आज ये वेबिनार भी रखा गया है कि कैंसर हैबिट्स और इन सबको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें. सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, दे actually this cancer actually hits them physically as well as mentally. तो mentally strong होना बहुत जरूरी है. mentally strong अगर आप होगे तभी आप अपनी बॉडी को भी actually physically fit रख पाओगे. तो कैंसर क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके, क्या कॉजेज हैं और कैसे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. As you can see from this figure,
there are different kind of cancers that is affecting from head to toe, even in men as well as in women. Women may be dekhe or men may be dekhe. It is affecting all parts of the human body. In case of women, the kind of cancers that can probably occur is head and neck, endocrine, breast cancer, blood, genitourinary cancer, gynecologic. In case of man, it can be central nervous system, brain, eye, lung, hepatobiliary, gastrointestinal, sarcoma, skin cancer, and there are many more cancers. But if we look at the risk factor and causes of these cancer, we find there are many risk factors, but in all the risk factor, the common risk factor is tobacco. Tobacco is the main cause of all the cancers that can have. Ma'am, next slide. If someone is asked what is the link between the cancer and tobacco, तो सभी लोगों को लगता है कि लंग कैंसर इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट कैंसर है, बट लेकिन हम सारे रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करें तो सभी में जो कॉमन रिस्क फैक्टर हमें मिलेगा, दैट इज टोबैको. टोबैको इज अफेक्टिंग all body parts. We can see nothing is left, no body part is left to be cancerous if someone is taking tobacco. It may possible that it can affect any part of your body. If we go to the statistic of this tobacco consumption, we can have a survey, or we can even we are already aware that mortality rate due to tobacco use in India is estimated at upwards of 3,500 persons every day. One woman dies of cervical cancer every 8 minutes in India. For every 2 women newly diagnosed with breast cancer, 1 woman dies of it in India. Breast cancer is rampantly increasing in India. Lastly, I would like to say that don't die before death. Life is like a segment between point B and D. B is the starting point, that is birth, and D is the ending point, that is death. Both are in our control, but the letter C, that is choice, in between B and D. What choices we make are totally in our control. Then why to smoke? And then why to suffer cancer? Life is one. Live it wisely. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Praveshji. Very informative information you have given to our audience. Thank you so much. Now, it is my pleasure to introduce our chief speaker of today, who has graciously accepted our invitation to join us today, whose achievements are second to none, a person of remarkable distinction and accomplishment, a person who has achieved great success in his field and has significantly contributed to community and society, a person whose work has left an indelible mark on our community. He has received so many awards. Let's welcome Dr. Pawan Gupta ji. He is MS, MCH. He is Director of Head and Neck Cancer Surgeon, Max Institute of ICanCaRe Vaishali, founder of ICanCaRe, course convener and master trainer for certified tobacco cessation courses. And he has been running so many campaigns like Save the Youth campaign, Chota Dana. So over to you, Dr. Pawan Gupta ji. My question to Dr. Pawan Gupta is that Sonalji, and what is a cancer and is it curable? Yeah, Sonalji, thank you so much, and thank you for inviting me for this wonderful session. Is for basically including everyone in this program. And as Preeti just said about the various 7 things that she had said about what she looks for during this day. And National Cancer Day is a very important day when we need to understand about tobacco, about cancer. As you have put this cancer, 2 important topic: what is cancer and is it curable?
अगर कैंसर के बारे में थोड़ा सा समझें, let me put it this way, cancer is a curable disease. Cancer is not a killer. Cancer is a killer treated late and treated insufficiently, right? But if it is properly diagnosed, properly treated, cured completely. And what Preeti ji has also said about various aspects of prevention, I'll come to that. But let me first tell you what is cancer, right? Pravesh ji has very well nicely put body and cancer and mind. Because cancer is not only bodily, mentally, physically, but socially and financially also is challenged, right? So these are certain very important aspects that we need to think of. Cancer body has got 3 billion cells, 3 billion cells in our body, and every cell is likely to become cancer if it is not treated properly, right? So there are types of cancers that can happen in our body, and cancer is basically an uncontrolled growth of cells. एक हम लोग एक जब अल्सर देखते हैं, कोई घाव होता है, घाव भी एक मतलब उसमें क्या होता है, घाव सूख जाता है, मतलब इट कैन स्लोली गेट कंट्रोल. But in a cancer, wherever there is an ulcer or there is a nodule or there is a lump which is formed, वो अपने आप बढ़ता ही चला जाता है, right? That is what we call it as cancer, which is continuously dividing cells, unregulated cells, उनका कोई लिमिट नहीं है, वो मल्टीप्लाई करते ही जा रहे हैं, and they become abnormal, right? That is what is called cancer, or that is what we call it as tumor. And tumor can be of two types. One is benign, that is सादी गांठ, और एक cancerous जो है malignant गांठ. सादी गांठ जो है, that can be a lump in the body, or it can be some ulcer which does not grow, which does not spread. Whereas a cancerous or a malignant lump or malignant growth, that will spread across the body, it will enter into it. Cancer को हम लोग बताते हैं as like a crab, you know, crab. It has got tentacles. It spreads into the body. It goes into the tissues and then gets into the blood vessels and can spread anywhere entire into the body, right? That is what is happening with the cancer. So these are two types, and this is just an example, like this I've shown in a breast. In a normal breast, there is nothing, no lesion, but in a blind tumor, if you will see this benign tumor, this is well rounded and well defined. But in a cancerous, you will see that it is all like entering into the tentacles. It's like a tentacles, and it is entering everywhere. So this is what is the difference between a benign cancer and a normal benign or a malignant cancer, so malignant lesions, right? So cancer can arise from any part of the body. It can arise, but the most important thing is there is some changes. हमारे हर सेल के अंदर हमारे chromosomes होते हैं. These chromosomes actually they change. When they change because of some effect, and what is that effect? These are that abnormal effect that comes from the physical or the chemical, right? Or because of our bodily changes, like a hormonal changes, because of our age factors, because of a lot of stress factors. So these hormonal changes that takes place, what we call it as oncogenes, right? When that takes place, then our normal cells becomes an abnormal cells, and this abnormal cells actually releases a lot of proteins and a lot of things which can actually keep on multiplying these cells. So when this cells keeps on multiplying, this is what we call it as cancer, right? And cancer is a curable when it is definitely. हाँ जी, डॉक्टर पवन गुप्ता, प्लीज आप ये बताइए कि हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कैंसर को, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उसके बाद एकदम से उनको कैंसर डायग्नोज हो जाता है. तो हमें कैसे पता चले, कैसे उसका अर्ली डिटेक्शन करें? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस? Yeah, thank you, Sonal ji. And one very important thing that Preeti ji had said, that we have to have early detection. Early detection can, but early detection किस चीज का करें? How do we know that this is cancerous or not a cancerous? So we need to understand कि what is a cancer, और हम लोग क्या चीज, ऐसा चीजें बदलाव जो आ रहा है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कैंसर इसका फॉर्म है. So these are some of the warning signs. These are warning signs in the form of CAUTION. That is right. Caution में क्या है? सबसे पहले change in bowel or bladder habits. Bowel and bladder habits का मतलब हो गया when our हमारे डेली की जो क्रिया है, डेली रूटीन्स है, राइट? हमारे लैट्रिन जाना, हमारा पेशाब जाना, अगर हमारे उस चीज में, इस क्रिया में कोई बदलाव आ रहा है,
right? Suppose a person is going only once a day or twice a day, but now he starts getting more, or constipation starts coming in, right? So, and if this is persisting, then this change can be something that we need to take care. Even in bladder habits, you will see that prostate cancers or bladder cancers, there may be blood in that, or there may be frequency may increase. So any change in bowel or bladder habits, so easy to remember, अगर कोई भी बदलाव आ रहा है हमारे change bowel and bladder habits में, वो हमें ध्यान देना जरूरी है. A sore that does not heal, especially in the mouth or white patches in the mouth. Okay, sore का मतलब है अल्सर, एक घाव. अगर कहीं हमारे शरीर में घाव होता है और ये घाव जो है बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा. जनरली हमारे दो तरीके के घाव होते हैं. एक तो ट्रॉमेटिक होता है, कहीं पर लग गई, हाथ में जल गया, कुछ लग गई, कुछ हो गया, तब भी हमारे घाव हो जाते हैं. मुंह में अगर हम लोग करते हैं तो कई बार दांत कट जाता है, दांत से अगर गाल कट जाते हैं तो भी हमारे घाव बन सकते हैं. तो ये जो घाव है, these are basically which will heal, which will become normal within a few, maybe maximum of 1 week or 2 weeks. आपको कोई भी घाव होता है, डायबिटिक घाव है, कोई भी घाव है, बट जो घाव पेनलेस है और वो बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा, वो हमारा घाव सीरियस है. 2 हफ्ते तक आप वेट करें, 2 से 3 हफ्ते तक वेट करें. अगर नहीं घाव ठीक हो रहा तो डॉक्टर की जरूर सलाह लें. तीसरा, अनयूजुअल ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड. अनयूजुअल ब्लीडिंग हमारे कहीं से भी हो सकता है. कई बार हमारे कोई भी ब्लीडिंग हो सकता है, मुंह से हो सकता है, नाक से हो सकता है, हमारे जो नीचे के हमारे जो पेशाब के रास्ते से होता है, लैट्रिन के रास्ते से हो सकता है. सो हमारे फीमेल्स में अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखें, अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज अगर फीमेल में हो रहा है, तो दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज सर्वाइकल कैंसर का हमारा बताते हैं कि वो कहीं सर्वाइकल कैंसर ना हो. सर्वाइकल मतलब होता है कि हमारे जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं. उसका सर्वाइकल कैंसर कैन बी वन थिंग. सो एनी अनयूजुअल ब्लीडिंग which is persisting should definitely be checked. थिकनिंग और लंप, कोई भी गांठ, एबनॉर्मल गांठ जो बढ़ रहा है, कहीं पर भी हो रहा है. ज्यादातर हम लोग ये गांठ हम लोग स्तन के लिए कहते हैं. जो भी हमारे प्रीति जी भी बता रही थी, हमारे प्रवेश जी ने भी बताया कि स्तन का कैंसर हमारे फीमेल्स में इंडिया में काफी ज्यादा है, स्पेशली इन द अर्बन ग्रुप. सो हर स्त्री को हम लोग ये बोलते हैं, एवरी वीमेन शुड नो द लुक एंड फील ऑफ हर ब्रेस्ट. अपने स्तन का खुद जांच करें और उसका पता लगाए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो. कोई भी गांठ, अगर कोई नई गांठ बन रही है, कोई गांठ बढ़ रही है, और स्पेशली हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये तो अरे ये गांठ है लेकिन दर्द तो हो नहीं रहा. दर्द नहीं अगर हो रहा है, वो गांठ ज्यादा सीरियस है, राइट? एनी लंप विच इज पेनलेस, विच इज इंक्रीजिंग इन साइज, दैट नीड्स टू बी चेक्ड, राइट? सो स्पेसिफिकली हम लोग ये कहते हैं फॉर ए फीमेल, फॉर द लंप इन द ब्रेस्ट, बट there are number of sarcomas, number of lumps that can take place in the bones, in the soft tissues, or even in the abdomen, like gallbladder cancers वगैरह. हमारे colon cancers में भी हमारे abdomen में पता चल सकता है, there is a lump of which can be felt on the stomach, tummy, right? तो उसको भी हम लोग को ध्यान देना है. indigestion और difficult, so ये 4 चीज हो गए, ठीक था. और 5th is indigestion और difficult in swallowing. निगलने में, खाने में अगर कोई तकलीफ हो रही है, निगल नहीं पा रहे, अटक रहा है, ठीक है? अगर निगलते मुंह में दर्द हो रहा है, निगलने में तकलीफ हो रही है, मुंह से पानी ज्यादा निकल रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, खाना पच नहीं रहा, तो भी हमें अपने डॉक्टर को सलाह लेनी जरूरत है कि कहीं वो अर्ली कैंसर ऑफ इसोफेजियल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर या फिर हमारे स्टमक कैंसर का संकेत दे सकता है, राइट? ऑब्वियस चेंज इन वॉट एंड मोल, हमारे सभी शरीर में, हमारे सभी के शरीर में हमारे काली तिल होती है. अगर कोई तिल इस तरीके से बढ़ रही है, फैल रही है, तो उसकी भी जांच करनी हमें जरूरी है. क्योंकि कोई भी तिल, एक तिल तो नॉर्मल तरीके से रहती है बट बढ़ती नहीं है, बट अगर कोई बढ़ रही है तो देन वी नीड्स टू टेक केयर, राइट? सो दैट हैज टू बी, वी नीड टू एग्जामिन एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट कि वो उसमें कोई कैंसरस बन तो नहीं रहा. 7वां बहुत इंपॉर्टेंट, नैगिंग कफ और होर्सनेस ऑफ वॉइस. आजकल के पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा कफ वगैरह हो रहा है, बट हमें ये चीज देखना है कि अगर कोई कफ हो रहा है या आवाज में बदलाव हो रहा है, आवाज में चेंज हो रहा है, तो आवाज में अगर रुकावट आ रही है, अगर आवाज बैठ रही है, तो उसका भी हम लोगों को चेक करना जरूरी है कि कहीं होर्सनेस ऑफ वॉइस तो नहीं हो रहा. और अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस है तो हो सकता है कि वो कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, कैंसर ऑफ द थ्रोट का
बता सकता है, या थायराइड कैंसर का भी वो संकेत कर सकता है। और जो कफ है, कफ का मतलब होता है कि अगर रेगुलर कफ है, अगर 4-5 दिन में ठीक हो गया, 1 हफ्ते में ठीक हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया, तब तो ठीक है। बट अगर सूखी खांसी या गीली खांसी या अगर खून के साथ में खांसी आ रही है, तो वो 2 चीज का संकेत करता है, या तो ट्यूबरक्लोसिस या कैंसर। तो उसकी भी जांच करनी बहुत आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज भी और मैं बताता हूं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो चीज हमें पता ही नहीं चल सकता, जो कि बहुत अर्ली साइंस में हो सकता है। जैसे कि हमें हमारे बदलाव में आ रहा है कि हमारे को भूख नहीं लगना, वजन की कम होना, बुखार होना, ये भी हमारे को संकेत देता है कि कोई हमारे को कैंसर, किसी प्रकार का कैंसर हो रहा है। तो हमने एक बहुत ही सिस्टम से हमने निकाला कि सभी को याद कैसे रखना है, याद कैसे रखें, कि कैसे हम लोग को याद रखें। हमने जितने भी सिम्टम्स बताए, जितने भी बताए, उसका एक सिंपल सा एक रास्ता है जिसको हमें याद रखना है, वो है छोटा दाना। ठीक है ना? बी केयरफुल एंड नॉट फियरफुल। दैट मीन्स अगर शरीर में अगर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की बदलाव आ रही है तो उसकी जांच जरूर करवाएं। राइट? छोटा दाना का मतलब है जब भी देखो छोटा दाना, उसकी जांच जरूर करवाना। कैंसर को बनने ना दो नासुर, जल्द करो इसे दूर। राइट? दिस इज माई स्पेसिफिक स्लोगन, जो हमारा छोटा दाना कैंपेन है, जो मैं डेफिनेटली प्रीति जी को भी मैं बताऊंगा, जैसे कि वो कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है अर्ली डिटेक्शन के लिए। इफ यू कैन जस्ट टेक अप दिस स्लोगन, एंड इट इज इजी टू रीच आउट टू द विलेजेस, टू द रूरल एरियाज, टू द कॉमन पीपल। अगर हम लोग पूरा सारे सिम्टम जब हम बताते हैं तो शायद किसी को समझ में ना आए, बट सिंपल वे से अगर हम बताएं, जब भी देखो छोटा दाना, दैट मीन्स अगर शरीर में कोई भी बदलाव आ रही है, या एनाटॉमिकल बदलाव, या फिजिकल बदलाव, या नहीं तो फिर हमारे फंक्शनल बदलाव, जैसे कि निगलने में तकलीफ, खाने में तकलीफ, लैट्रिन में तकलीफ, तो भी हम लोगों को उसको जांच करनी आवश्यकता है। And with this, I specifically want to just reiterate what Preeti said. Detection and prompt treatment, cancer is curable. We have to, अगर हमारे डिटेक्ट भी हो जाए, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट भी हमने सही तरीके से नहीं लिया, सही समय से नहीं लिया, सही जगह से नहीं लिया, तो भी हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है। So we have to understand the early signs and symptoms. और थैंक यू सोनल जी फॉर आस्किंग सच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि हम लोगों को ये पता चले कि कैंसर किस प्रकार से हमारे को होता है और किस प्रकार से हम लोग आगे का बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। One more question कि what are the ways to prevent it? How can we prevent cancer? Yes, this is a very important question. Again, प्रवेश जी आपने बड़े ढूंढ करके निकाले हैं सारे क्वेश्चंस। See, that is very important is हम लोग कैंसर के बारे में जान लिए, कैंसर क्या है हमने पता लगा लिया, कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं पता लगा लिया, बट हम जितने लोग बैठे हुए हैं सभी को तो कैंसर नहीं होने वाला। अब हम अपने आप को क्या ऐसा करें, क्योंकि कैंसर इज ए व्हाट आई वुड से, कैंसर इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज है, कैंसर कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहा, कैंसर इज ए जेनेटिक चेंज बिकॉज ऑफ अवर फिजिकल एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ अवर फूड, बिकॉज ऑफ अवर अदर थिंग दैट वी आर टेकिंग। सो ये जो हमारी चीजें हैं, इसके बेसिस पे हमारा होता है। और हमारा ये एक एपोप्टोसिस करके एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर डाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में देखिए जितने 3 बिलियन सेल्स हैं, और सारे शरीर में हमारे सेल्स जो बदलते ही जाते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग, दे कीप ऑन इवॉल्विंग इन आवर लाइफ टाइम। बट कैंसरस सेल हमारे शरीर में सभी के बन रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस आर गेटिंग कैंसरस सेल्स इन आवर बॉडी। बट लेकिन किसी को कैंसर बन जा रहा है, किसी को नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कैंसरस सेल कैन बी टेकन केयर बाय एपोप्टोसिस। दिस इज अ मैकेनिज्म दैट आवर बॉडी हैज, कि वो एपोप्टोसिस से, एपोप्टोसिस मतलब जो भी अनरेगुलेटेड सेल्स है उसको हमारा बॉडी उसको किल कर देता है। बट ये जो किलिंग पावर है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी इम्यूनिटी। राइट? हमारी बॉडी इम्यूनिटी के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमारी शरीर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रांग है। और हमारे शरीर कितना स्ट्रांग बनता है, हमारे शरीर केवल मसल्स का स्ट्रांग नहीं कि हम लोग जिम में गए और स्ट्रांग बन गए। इट इज फ्रॉम आवर ओन इनसाइड आवर बॉडी। इनसाइड आवर बॉडी इट वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, बी फिजिकली स्ट्रांग एंड इम्यूनिकली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बनाता है। सो दिस immunity is developed, and how we take care is the 3 important factors that are very important. How we eat, हमारा रहन सहन, हमारी खान पान, और हम अपने शरीर का किस प्रकार से देखभाल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर कितना स्ट्रांग रहेगा। तो हमारे अगर हम लोग खान पान पे देखें
नो टोबैको, नो अल्कोहल, एंड वी नीड टू हैव हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट, हमारी सोनल जी खुद ही डाइटिशियन है, वो मेरे को भी सलाह देती रहती है क्या खाना है क्या नहीं खाना. तो खाने पान में वी हैव टू हैव ग्रीन, lot of vegetables, lot of minerals, and all sorts of vitamins that should be accumulated into our body. So no tobacco, no alcohol, and healthy diet, that is very important for our eating habits, our खान पान में. and हमारे अपनी देखभाल कैसे, हम अपने शरीर का रहन सहन कैसे करें. We have to maintain a good physical fitness, we have to have a good weight control. Obesity is again can lead to number of diseases, but at the same time if we are obese but active, that is also very important. So physical fitness and weight gain, but at the same time mental, that is our mental strength is also important. और हमारे भारतीय उसमें yoga has a very important role in our life, right? And then थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है टेक केयर ऑफ अ बॉडी. हम कैसे हम लोग को टेक केयर करें जिससे कि आगे चल करके हमारे को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और ये चीज का जो है आप ये देख रहे हैं, अभी प्रीति जी ने भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा था, वी नीड टू डू स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, राइट? वी हैव टू डू स्क्रीनिंग प्रोग्राम. दैट इज स्क्रीनिंग इम्प्लाइज, बट स्क्रीनिंग मतलब इट शुड नॉट बी दैट कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर्स अलोन, राइट? We need to learn what is important for ourselves. Self screening is also important. Self body awareness is important. That is where we get this छोटा दाना campaign. हम अपने शरीर को खुद पहचाने और कभी कोई बदलाव आए तो उसका जरूर चेक करवाएं. Immunization, that is again a very important thing. And I congratulate the Innerville and specifically Preeti ji for taking up this issue of cervical vaccination. And there are two major vaccination which is important. One is the cervical vaccination, the other is the hepatitis vaccination. These are the two vaccines which are really making a lot of difference. And this vaccination not only is taking care of the cervical vaccine or the cervix, but in the male it is also taking care of the oral and oropharyngeal cancers also. So this is a very important vaccine. और सबसे बढ़िया बात है कि इंडिया में now we have got our vaccine which will be available for just 200 rupees as compared to 2000 rupees which we are getting, right? So this is another important thing. And so we are already in touch with a lot of government organizations so that we can collaborate with you so we get this vaccination program in your Innerville club. And then is the दिन की sunlight है, उसको हम लोगों को थोड़ा सा we have to be careful that we do not ultraviolet rays or infrared rays, but the morning sunlight or the evening sunlight is good because it contains vitamin D. So these are some of the important aspect कि हम लोग अपने आप को prevent कैसे करें. So this is a cancer prevention triangle. Diet, weight and physical activity is very. Diet में हमने बता ही दिया कि क्या क्या चीज चाहिए. And this also that started from ICanCaRe and where we would think that we can get involved कि हम लोग किस प्रकार से सभी को we can make our mental and physical and increase our immunity. So catch them early. This is one of the slogan that I have been promoting for breast cancer. 3 minutes, 3 fingers, 130 days can save your life. This itself is a big topic. I will talk about it in some time later. So 3 minutes, 3 fingers, once in 30 days can save your life. This is for our breast cancer. And of course, it is important that we work in such a way that we detect cancers at an early stage. There are 4 stages. So this is where I have read, bigger the cancer, smaller the results. जितना higher stage में मिलेगा cancer, उतना ही results हमारा कम होगा. And this is what is a bigger gave me name, smaller gave me fame. This is a separate topic. So thank you so much, Sonal ji, for this important topic. And I hope it has been of use to all the participants who are here. Over to you, Sonal ji. Thank you, sir. Now I invite Dr. Reena R. Kumar. Hello, Sonal ji. Namaskar to everybody and greetings from. Thank you so much for having me here today. Reena ma'am, I want to just ask कि ये क्या है वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक? किस ट्रैक की बात करी जा रही है? किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं? कि हमारा यूथ किस दिशा में चल रहा है? मतलब क्या है ये कि वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, मतलब हम किस गलत दिशा में हमारा यूथ चल रहा है? आप लोग बताइए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो ये लेटेस्ट ट्रेंड जो हमारा यूथ इसको फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं देख रही हूँ आजकल का यूथ क्या कर रहा है कि रात को जागता है एंड दिन में सोता है.
एंड इतना ज्यादा किसी पार्टी में हुक्कास एंड शराब चल रही है, तो प्लीज कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट. First, let me introduce Dr. Reena Kumar. She is BDS, MDS. She is academic director. I think we'll leave that, Sonal. I think, thank you, Sonal, for that quick words of introduction. I thank Inner Wheel today for taking this up, and I really congratulate that all of you have come together to take up this challenge and to be a part of the National Cancer Awareness Day. So this is a very important day. It started all out in 2014. 2014, since then, we are celebrating 7th of November as the National Cancer Awareness Day in India. And this is very important for us. And I think Pravesh ji ne bataya ki hamare cancer ki sthiti aur hamare kaun se body parts really affected hai, itne zyada affected hai, and the percentage which is also affected, we just heard from two people just now, Dr. Pawan and as well as from Pravesh ji, as to how much it is. So you see, the hamare country mein jo national cancer control program shuru hua, because the awareness came up that this is a killer disease. Ye ek bahut killer disease hai. Ye 1975 mein shuru hua. The number of people in Asia, we say, is about nearly 50%. We say approximately 49.5% of people in Asia are affected. Hum kehte hain ki India mein 1.1 million people, are, and of this 1.5 million, 1 in 10 are going to get cancer. We say in among the Indian population, 1 in 10 are going to get cancer. 1 in 15 will definitely die. और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है कि ये जो कैंसर है, 70% ऑफ द कैंसर इज प्रिवेंटेबल. तो इतना कैंसर हो रहा है कि 1 in 10 are going to get cancer, 1 in 15 will die, but all of this you can say 70% is preventable. In 70% में 50% is tobacco related. बाकी जो है rest are other factors. अब ये रेलवे ट्रैक की बात जो आई ना, I'd like to discuss the railway track. हमें सब पता है that if you walk on the railway track, it is a punishable offense in our country and everywhere else also. It is something you can be jailed for. हम रेलवे ट्रैक पे वॉक नहीं कर सकते, हम रेलवे ट्रैक पे लेट नहीं सकते, हम रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर हम अपनी सेल्फी नहीं ले सकते. हमें सब पता है कि that one, it is an offense. Second, we might get run over by a train. Third, of course, we might get electrocuted. We do not know what are the other things that can happen. And we know it. But yet, there are many amongst us who are risk takers. The youth are risk takers. Abhi Sonal ji ne bataya, they sleep in the daytime and they are awake at night. So they are risk takers. They like to have the thrill, because the thrill really is where they feel that the energy and the hormones are coming. कि हमारी सारी जिंदगी पे जो जोश पड़ा हुआ है उसी पे पड़ा हुआ है. अब हमने क्यों रेलवे ट्रैक, सोनल जी, you have put it. I really appreciate this for putting this, because हम रेलवे ट्रैक को हम टबैको के साथ मैं इक्वेट करना चाहूंगी. बिकॉज यू सी, अब 70% कैंसर जो प्रिवेंटेबल है, उसमें से 50% जो है, इट इज कमिंग आउट बिकॉज ऑफ टबैको एंड टबैको रिलेटेड फैक्टर्स. अब हमारी यूथ क्या कर रही है? एक साइड हमारी टबैको इंडस्ट्री है और दूसरी साइड हमारी यूथ है, एंड ऑफ कोर्स द यंग लेडीज एंड द यंग पीपल इन द कॉर्पोरेट एंड अदर पीपल. सो टबैको इंडस्ट्री को तो पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए, वो ढेर सारा पैसे चाहिए, लेकिन उनके पुराने कस्टमर्स सारे मर रहे हैं जो अभी तक टोबैको ले रहे थे. वो दे हैव गॉट द टोबैको रिलेटेड डिजीजेस, कैंसर, एंड दे आर डाइंग. सो दे हैव टू गेट द न्यू पीपल. एंड हु आर द न्यू पीपल? द न्यू पीपल आर, इनके नए कस्टमर्स कौन होंगे? बच्चे होंगे, लेडीज होंगे, यूथ होंगे. दिस आर द पीपल. इनको घिसे पिटे आइटम्स नहीं पसंद, वो पुराने बीड़ी शीड़ी ये नहीं लेने वाले. तो उनको स्टाइलिश आइटम्स विद नया नया डिजाइन, नया नया फ्लेवर्स. ये ई सिगरेट्स हमारे कंट्री ने बैन कर रखा है सिंस 2019. गवर्नमेंट हैज बैंड ई सिगरेट्स. फिर भी हमारे यूथ ई सिगरेट्स ले रहे. कहाँ से मिल रहा है? दे आर गेटिंग इट ऑल फ्रॉम द ऑनलाइन purchases. Hookah is being sold. Hookah is a social recreational item के हिसाब से बेचा जा रहा है. हुक्का की जो टबैको सेल्स है उसके बारे में कोई और दिन बात करेंगे. और दूसरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ई सिगरेट्स जो बने हैं, ये सारे इतने छोटे छोटे बने हैं, इतने कलरफुल बने हैं. लुक्स लाइक कलर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, लुक्स लाइक लाइक पेन ड्राइव्स, कि इतने डिसेप्टिव है. So this is what the new generation is doing. We all know that there are enough billboards, everything is there. Cigarette packets where there is enough warnings. There is tobacco is dangerous, nicotine is dangerous, smoking is dangerous, using it in any form is dangerous. आप flight में चढ़ेंगे, वहाँ air hostess कहती है कि you cannot have e-cigarettes on you, but yet there are people who will be caught carrying that and getting fined. So using tobacco is like you are actually walking on the rail track, because tobacco is the root cause of 50%
of besides the जो हमारी NCDs हम बोलते हैं, जिसमें हमारा है कार्डियोरेस्पिरेटरी, हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस है, कैटरैक्ट है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज हो गई है. मेंटल हेल्थ के बारे में आई थिंक इवन डॉक्टर Pavan touched on it, so did Pravesh touch on it, saying that it's a very big issue because this causes stress. This is a slide, I think you have seen it twice in this, so we will not stick on this. We can move on to the next one. So if we know that if caring, self-care is more important, being careful is important. We take these smokeless tobacco, and हम smokeless tobacco लेते हैं तो हमारी मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है. So one of the ways, the question which Sonalji asked Dr. Pavan was, how do you recognize people? So I would like to kind of bring this in here also, कि अगर आप किसी को जो smokeless tobacco लेते हैं, जो गुटखा chewing tobacco लेते हैं, ये जो पान मसाला इस चाय की चीजें लेते हैं, उनको आप बोलेगा कि मुंह खोलिए जरा प्लीज. आपकी मुंह खोलिए. कितने उंगलियां जाते हैं आपके मुंह में? आप जब मुंह खोलते हैं, क्या आपका मुंह में 3 से 4 उंगलियां जा पा रहे हैं? यूं मुंह नहीं खुलेगा इनका, क्योंकि ये दीज एरियाज, इनके अंदर के जो जितने मांसपेशियां हैं, जो सारे टाइट हो जाते हैं. दे बिकम लाइक इलास्टिक बैंड्स, बिल्कुल प्लास्टिक टाइप रबर हो जाते हैं. हमारे नॉर्मल फेस में इलास्टिसिटी है, लेकिन वो तो प्लास्टिक हो जाता है बिल्कुल और खुलता नहीं है. ICanCaRe की तरफ से हमने अपनी research, because research is a very important thing. Thank you, Preeti ji, for touching on research. And of course, the Cancer Awareness Day really touches on the fact that we have to get together to actually promote research. So at ICanCaRe with Gujarat University, we have created a product, which is an indigenous product made in India, researched and R&D with ICanCaRe, where we have, this is called TrisCare. It's a mouth opening device. So this is individualized, and a person has a way of grading it. So you see there is a grade here. There's a scale which is not really visible, but you can get to know how much is the mouth opening. It can be screwed and opened by turning that screw, and it kind of balances the upper and the lower jaw and helps in the mouth opening. So you get to know, grade it and see how is it working and how much are you able to get it. Now, this is a very sad case, a person who is an astrologer who predicts other people's lives. People go to him, pay money. We all go to astrologers and, whatever, and pay money. And there are many amongst us who do that. And they read our future. But here is this gentleman who's an astrologer. He was a tobacco user. He couldn't read his future, but tobacco knew his future, because he was that 1 in 15 who was definitely going to go. So, the whole essence of everything is, agar hum jante hain ki railroad karne se hamare liye it is very dangerous. We know that tobacco is very dangerous. We know 70% of the cancers in India, of which a huge number is going to get cancer, huge number is going to die. It is preventable. The first thing is love yourself. अगर आप अपने को देखभाल कर सकते हैं, आप बाकी सबका देखभाल उसके बाद करेंगे. तो अपने के देखभाल के लिए good habits, good diet, a stress-free life. There is no stress-free life. But लेकिन हमारे capacity to handle stress and to change the stress into breaking the stress up into smaller jobs and making that as a thing which can be moved ahead. So that is one. So love yourself, love your family, help others, empower, because educate yourself, move and empower and educate others, go in for helping people to quit tobacco, help people for early detection, spread the message about breast awareness, spread the message about oral healthcare awareness, spread the message about tobacco awareness. And at ICanCaRe and with Sonalji in the lead, we have done a great job, and we are quite sure, Preeti Gognani ji, that you are going to take this, and all the other DCs together are going to take this and make the tobacco marshals into a program which is going to be an enviable one. Once again, before I close, I congratulate Inner Wheel, and especially Gognani ji for telling us about, Preeti ji for telling us about the vaccination program that you are involved with. Excellent, excellent involvement, and we look to greater involvement with the entire Inner Wheel. Thank you very much, and thanks so much for having me here. Thank you. Namaskar. And one more question. Of Ji, the various factors that we have learned today, give one factor that can change the cancer scenario and why. Okay. पहली बात, जैसे मैंने बताया कि अगर हमें education and awareness, right, that is the first thing that we'll have to have. So पहली बात तो, अगर मैं किसी को, the air hostess की जो story है, मैं तो वो कहती हूँ, that is the classic one. Air hostess कहते हैं कि आप जब pressure low होगा, जब mask नीचे आएगा, अपने मुंह पे पहले डालिए, फिर अपने बच्चे पे.
You know, the mother is always trying to save the child first. We are trying to save our loved ones first, but it's very clear that you have to save yourself first. So love yourself first. Take care of your health. Don't indulge in bad habits. Avoid tobacco, avoid alcohol. Try to be as stress-free as possible. Indulge in good mental health, which is, taking some time for yourself, enjoying it, learning to be breath conscious, meditation, some amount of syncing with nature, syncing with your loved ones, spending time, and most important then, being aware कि अपनी education आप करें, how to be breast aware, how to help others to be breast aware, how to be helping others to be oral care aware. वो छोटा दाना campaign, save the youth, talk to the children, don't hesitate to speak. हमें ये करना है कि हम आगे जाए, सबको अपने बाप तो strong बने, उसके बाद ये मैसेज हम सबको दे and involve and be inclusive. Because जब तक हम inclusive नहीं होंगे and we say that नहीं ये तो मतलब मैं तो I am a dental surgeon, मैं क्या breast के बारे में बात करूंगी, मुझे तो मतलब वो बोलेंगे क्या. No, I am a oral healthcare professional, I am a healthcare professional, I am a citizen of the country. I prefer that I have got to have a responsibility to the society. मेरी responsibility हर नागरिक के तरफ है, हर बच्चे के तरफ है. I am going to raise a voice and I am going to really put up saying that be aware, be bold, have a voice, speak about it, help others, help yourself first. Sonal ji, agar aapka question ko main agar if I would like to just add here, so I am as a cancer surgeon, I see patients every day, right? I see patients every day, and the fact is that 70% of the cancers that I see is because of physical, some physical lifestyle disease. And one factor which is very important, as you asked, one factor, and that is tobacco. Tobacco is of various forms, like it can be of smoking form, smokeless form. India is the country where we have got the highest varieties of tobacco, and we have got the highest cancers also related to tobacco. 15 types of cancer we have already said. So one factor that can actually change the whole scenario of cancer, if we can control tobacco. Tobacco is there in oral cancers, it is there in esophageal cancers, it is in the lung cancer, it is in the breast cancer, it is in the cervical cancer, it is there in the every part of the body. 200 types of disease can be there, and it is one factor that can really needs to be addressed is tobacco. So thank you so much. 70%, as I said, 70% of cancers are preventable factor is tobacco. So, and 50 of them is tobacco related, and the rest 20 is only the others. Thank you so much. Thanks, Dr. Pavan, and thank you, Sonalji, and thanks everybody for having me here. Thank you, Dr. Pavan Gupta ji. We have with us District Chairman of District 304, Mrs. Beena Shahji. Under her leadership, the club has won 11 awards, including Excellent Club Awards, Excellent President Awards, etc. And she has launched the e-bulletin and website for her club also. So over to Beena Shahji. My question to her is that how harmful is tobacco for our health? Hello. Hanji. Am I audible, ma'am? Yes, yes. Yeah. Just now I was listening to the learned guest doctors, and I see that it is 50% of our cancers are caused due to the tobacco. Hello. Hanji, we can Did hear you you. hear me? Yes. Hello. Am I audible? Yes, yes. Beena ji. Yeah. So 50% of the cancer cases are due to tobacco. So I think out of the 70% cases, if 50% is due to tobacco, it is around most dangerous. So we should stop all our students from smoking and all. We should go to schools, to the teens, to ask them to stop smoking. It is actually given everywhere, but still people find some way out. But if we at Innerville members try to go to the grassroots level, we can surely make that change. How, as a DC, you will bring a change in the society? I will try to organize webinars, and also on January 10, as just now told us,
that we'll be organizing marathon for cancer awareness, and also I was thinking of giving vaccination. I think already Ratlam Gold has given vaccination to cancer students, cancer patients from girls, and we have already started this as an initiative in our district. Beena ji, I want to add on this कि first women needs to be empowered, because हम लोगों को खुद को ही नहीं पता कि how harmful this tobacco is, कितना ये घातक है, हम लोगों को खुद को ही नहीं पता. पहले तो हमें अपने आप को सिखाना है, हमें अपने आप को एम्पावर करना है कि मतलब ये कितनी हद तक हमारे बच्चों को नुकसान कर रहा है, हमें नुकसान कर रहा है. And you know 5,500 people start every day. 3,700 people die every day. And every 2 seconds, one person dies just because of this tobacco. और जो टोबैको यूजर है वो अपने आप को ही नुकसान नहीं दे रहा, मतलब वो अपनी फैमिली को, कुलीग्स को, बाय स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट, सब चीज को वो स्पॉइल कर रहा है. एंड जैसे कि सिगरेट्स के स्मोक से न केवल जो स्मोक कर रहा है उसको प्रॉब्लम है, पर जो साथ में है, उनके आसपास है, सराउंडिंग्स में है, उनको भी ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. तो वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर, मेक एवरीवन अवेयर दैट पब्लिक प्लेसेस में तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद होना चाहिए. स्कार्फ है मेरे पास, स्कार्फ है जैसे वो जो उसका था ना, जैसा कि मैं आप लोग देखिए कि एक अगर सिगरेट बर्न करती है तो उसके अंदर से इतने कार्सिनोजेंस एलिमिनेट होते हैं कि मतलब कि वो जो सिगरेट नहीं भी पीता उसके वो भी इफेक्टेड होता है. जैसे सपोजिंग हस्बैंड अगर स्मोक करता है तो उसकी फैमिली, बच्चे, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, हर चीज को वो नुकसान दे रहा है, कार्सिनोजेंस प्रोवाइड कर रहा है. एंड हम देखेंगे कि 3 ट्रिलियन cigarettes are smoked, 9 million trees are destroyed, and 3 trillion matches are being burnt. अगर हम एक सिगरेट को कंट्रोल कर ले तो हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. कितना गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, कितने पैकेजेस, 3 बिलियन पैकेजेस, कितने कार्टन्स, कितने स्पिट ऑफ स्मोकलेस टोबैको. आप देखेंगे कि हर जगह पे जो स्मोकलेस टोबैको लेते हैं, कितनी स्पिट मतलब वो फेंकते हैं हर जगह पे, कितने प्लास्टिक, मेटल्स, ब्यूटेन ऑफ द लाइटर्स. मतलब ये जो एक सिगरेट है जो इंसान अगर लेता है तो वो अपने आप को सुसाइड कर रहा है. और यू कैन सी कि जो कोई भी अगर कॉलोनी है, कैंपस है, तो क्या चीज पोल्यूट कर रही है सबसे ज्यादा, दैट इज सिगरेट की बड्स वगैरह उसको पोल्यूट कर रही है. तो आप देखिए कि कितनी नुकसानदायक ये चीज है. तो एज अ इनर व्हील मेंबर्स हमें जो है सब जगह पे ये अवेयरनेस फैलानी है. As a inner wheel, if we are true inner wheel member, and if we want to do something for the society. Now I invite Mrs. Urvashi Mittal, District Chairman of 301. My question to her is, next slide please. Urvashi ji, women liberalization versus women discipline, what strategy should be adopted for large scale effect? आप देखेंगे जगह जगह पे विमेन्स, मैं देख रही हूं कि जो विमेन्स हैं क्या कर रही है, बच्चियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां क्या कर रही है, कॉलेजेस एंड स्कूल्स के बाहर ही वो सिगरेट स्मोक कर रही हैं. मतलब वो ये कह रही है कि हम मेंस के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं. तो क्या ये ठीक है? Put some light on it. And what as an inner wheel member आप कर सकती हैं इसके लिए? Hare Krishna. Thank you, Sonal ji, for inviting and for this lovely question that is so close to my heart. Thank you for giving me an opportunity to talk about it. And before I go on to it, my salute to you for putting in such sincere, hard efforts for making it such a huge webinar and involving so many districts and inner wheel members. Now coming to your question, जहाँ पर भी large word आता है ना, I believe all of us, we feel so enthused about it because we call inner wheel the largest women voluntary service organization in the world. तो जहाँ भी हम large की बातें करते हैं, सारे inner wheel members इसके साथ identify करते हैं. Our presence on social media is also large, and we have large number of dedicated, committed, sincere members who are ready to follow.
तो जहां तक बात होती है किसी भी स्ट्रेटेजी को लार्ज स्केल बनाने की, I would say it and I would urge everyone, and this is but natural, that awareness is the first step. पर जहां तक बात आपने कही, तो इसलिए हम इसीलिए that's why we are here attending a webinar, because we want to make everyone aware. Now the thing is women discipline versus women liberalization. Yes, with due regards to all men speakers and guests, we all must have heard, if you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. तो जैसे हमें सबको पता है, बच्चा सबसे पहले, whether the ladies, the mothers are working or homemakers, बच्चा सबसे पहले कहता है माँ. तो mother is the first guru. प्रथम गुरु माँ हुई. तो we are change makers. We have the power to influence society and the surroundings greatly. तो उसमें हम देखते हैं कि in the name of westernization, globalization, liberalization, few concepts have set in which are distorting our traditions and cultures and the conduct of ladies in general. जब हम लोग कहते हैं कि हमें आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, हम लोग भूल जाते हैं हमारा एनाटॉमिकल डिफरेंस. हमारे को माँ बनना है, हमारे को बच्चा भी पैदा करना है, and whatever we do, that child learns from us. So all I will say is definitely awareness is the first step to make anything large. Innerville has it in plenty, but then awareness की भी पहले का first step है, we must browse through. हम अपने अंदर झांक के देखें. तो अगर हमारे घर में कोई male member, any child is indulging in it, so the first thing is कि हम उन्हें इनसे free कराएं, because whatever we say or write, we must do that also. Then only it will have that convincing effect. और अपने को भी browse through करें. जैसे आपने भी कहा, women liberalization does not mean adopting those practices beyond control, which further give it as a negative effect. So Sonalji so rightly said, I can sum it up only in one line. Women liberalization and women discipline, definitely we must pay attention to it, because we come from those organizations where we say we are working for the betterment of society in general, and women being our focal area or large scale. Yes, Innerville can do that in plenty, of course. So thank you for bringing this webinar to all of us and for making it such a large webinar कि आपने 7 district को इसमें host बना दिया. Thank you once again and congratulations, best wishes. We stand here strongly to salute and to support you in this cause. Thank you so much, Urvashi ji. Now, our next DC is District Chairman of 317, Vishali ji. She is BSc in Electronics and she joined Innerville Club of in the year, sorry, I can't read this because I'm not aware of this place. It's ICanCaRe. Okay, Yeah. in year 1993, aspires to work for furthering the cause of women empowerment, girl child education and awareness programs among the underprivileged in the society. My question to her is, please next slide. Our children are at risk. Children are day and night exposed to tobacco. आप देखेंगे कि जब हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ के टीवी भी देख रहे होते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं, जैसे बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए एंड ऑल, इस टाइप के जो है वो आ जाते हैं. तो हम अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें कि वो इससे जो है इसके साथ ना जुड़े, इस टोबैको के साथ ना जुड़े. हम अपने बच्चों को किस तरीके से टोबैको से बचा सकते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. Yes. Hello, everyone. First of all, I would like to thank you, District 310, for joining District 317 in this thoughtful webinar. Thank you, Sonalji, for taking so much efforts for the success of this webinar. And I would like to thank all the speakers also. They have given very much information regarding this cancer awareness thing. Now coming to the question, how to protect our children from the advertisements, etc. I think government should put ban on these types of advertisements first. I think in many cases they have stopped doing this advertisement, but they put the advertisement and they underline एक रहता है कि this thing is hazardous to health. तो ये सब चीजें हैं वो पहले ban होनी चाहिए. And we cannot stop our children from being exposed to these harmful substances. They will come across it in schools, colleges, television, and social media also.
The best thing, according to me, we can do is to talk about it and make them talk about their views. Second thing we can do is to lead a healthy life and inspire our children to do the same. So this is, in short, I'm thinking about this question, Sonalji. As a inner member, it is our responsibility as a parent also, since we are all women organization, it is our responsibility to guide our children and make awareness amongst our members. हम लोग अगर कर सकते हैं तो mostly सब समाज तक ये message definitely जाता है. When we start doing the thing from our home, it will be effective, of course. थैंक यू. खुशहाली जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसा कि मुझे भी पता था कि तंबाकू खराब है, आपको भी पता है, सबको पता है, और इवन कि हमारे जो पैकेट्स हैं, सिगरेट्स पैकेट्स हैं, या फिर हमारे जो स्मोकलेस जो हमारा टोबैको है उसके ऊपर भी लिखा गया कि तंबाकू खराब है. लेकिन उसकी डेप्थ तक हम विमेन्स कैसे पहुंचे, किस तरीके से हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए कि हम जो है कैसे हम एम्पावर्ड हों. पहले इट वाज मतलब कैसे ये एक्सेप्टेबल नॉर्म है, इसको नॉन एक्सेप्टेबल नॉर्म हमें किस प्रकार से हम बनाएंगे, किस तरीके से. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. ये चीज चालू होती है हमारे घर से. लड़कियां सीखती है कहाँ सीखती है? घर में. अगर आपके फादर लेते हो कुछ, इन फ्यू केसेस आई डोंट नो, मदर्स भी अगर कुछ स्मोकिंग वगैरह करते तो डेफिनेटली बच्चों को लगता है कि भाई ये तो अच्छा ही है, माय पेरेंट्स आर डूइंग दिस. अगर हम हमारे ऊपर कंट्रोल करें और ये जो खराब है चीज है वो हमारे बच्चों के सामने हम करें नहीं. या इफ कॉलेज गोइंग गर्ल्स है हमारे, आजकल सब जगह दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां स्मोकिंग करते हुए दिखती है. हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं तो वी कैन सी दैट. और ऑल द मेनी वर्किंग वुमन, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, दे मस्ट बी हैविंग पीयर प्रेशर्स एंड ऑल एवरीथिंग, बट स्टिल लड़कियों का ज्यादा स्मोकिंग करना बढ़ गया है. दे आर नॉट थिंकिंग कि वो प्रेग्नेंट है, क्या है, कि इट्स नॉट गुड फॉर देम. लेकिन इसका वही है कि हमें ये हमारे घर से ही चालू करना चाहिए. बाहर जाके कितना भी हम प्रबोधन करें, अनलेस वी स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम आवर होम, इट विल नॉट चेंज, ऐसे मुझे लगता है. लेकिन इसके लिए हमें एम्पावर्ड होना, हम विमेन्स को एम्पावर्ड होना बहुत जरूरी है. We are all empowered, सोनल जी. हम सब है, हम वही कर रहे जो बस बड़ी बातें बोल के नहीं करना है. We have to adapt these things. हमें ये join hands together. हाँ, हमें एक साथ होके करना है. लोगों से अब हम हमारे, वही कह रही हूँ मैं, वी आर हैविंग जितने हमारे 55,000 अबव मेंबर्स है एसोसिएशन के, इनरव्हील मेंबर्स है, हम इतने भी काम करें कि भाई हम हर एक अपने घर में अगर हम ठान ले कि हमें इसका नहीं मुकाबला करना है, हमें अवेयरनेस करना है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसे लगता है. सो थैंक्स अ लॉट. Thank you so much. Now, next GC with us is Mrs. Rasika Bahadur. She has dedicated her life to social services. She was associated with Innerwheel 18 plus years ago, worked towards human welfare and compassionate for animals, particularly passionate for environmental preservation, sustainability, and advocacy of greener future. Avid marathon runner. Welcome you, Rasika ji. Thank you. My question to you is, faith of a newly married girl finds her spouse a smoker. Want to hear your comments on it. Sure. So first of all, respected all the dignities, and thank you, District 310, Anita ji, Chairman of District 310, and PDC Sonal Bhatia. And that is a very good initiative by all the members of the District 310. बहुत अच्छा लगा, very nice initiative thrown by you. And I really appreciate the Dr. Pawan Gupta has given us very nice knowledge about the cancer, and all the doctors out there, very nice knowledge they have given to us about the cancers and about the railway track. Very nice concept to be highlighted over here. So it's a very nice question. How come a girl find a husband? The very first day find a husband a smoker.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड से कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने हस्बैंड को एक कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए, उसको एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, बिकॉज दैट्स द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग योर हस्बैंड, वेरी फर्स्ट टाइम। पहले अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एंड सेकंड और उसको एक एक्टिव और पैसिव स्मोक के बारे में इनको प्लीज गाइड करना चाहिए। हस्बैंड्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, इवन तो वर्क प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, तो हमको उसको समझना चाहिए, उनको साथ में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि फैमिली प्रेशर हो या घर का प्रेशर हो, वर्क प्रेशर हो, हमको अपने हस्बैंड पर एक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, बट आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। एंड मोर ऑफन आपको उनको एक बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में यू आर स्मोकिंग इन द पब्लिक, इट्स अ फैशन राउट। तो आपको उनको बताना चाहिए ये आज का फैशन नहीं है स्मोक करना पब्लिकली, है ना। आपके फ्रेंड सर्कल कुछ भी बोले, बट स्टिल यू शुड फाइंड कि स्मोकिंग कितना डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपने हस्बैंड में लाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, प्लीज मेक श्योर दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस पे लीजिए, उनको बताना चाहिए, इवन यू कैन से टू द सोसाइटी ऑल्सो, अपने हस्बैंड को इतना कॉन्फिडेंस में लो ताकि वो दूसरों को भी मोटिवेट कर सके, एटलीस्ट टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। So that's my vision of putting the things, and really appreciate the good work by District 310. So thank you, PDC Sonal ji. Thank you so much, Rasika ji. मेरा ये मानना है with the right knowledge and collective efforts, we can prevent, manage and eventually win over this tobacco if we all come together. Our next DC is Rita Sharma ji from District 307. She wants to serve the undeprivileged, unequal, downtrodden, ignored and battered ones in the community. My question to Mrs. Rita Sharma ji is that, next slide, please. Faith of a newly married girl finds her spouse a smoker. What could be your role as a parent? Accept the faith. Rita Sharma ji, are you there? She's not here. I don't think she's here. Okay. So we'll just skip. I saw her. I think she's there. Sonal ji, even I'm not able to locate her. So let's go ahead. Let's go ahead. Anybody would like to answer this question? Dr. We can Pawan, take you it answer later. this question, please. We will take it later. No issues, Sonalji. We'll take it Okay. later when we have the discussion. So let's go ahead. Our next DC present over here is Mrs. Sandhya Gupta. She is district chairman of 311. My question to her is, next question, next slide, please. What would you do if you find a vape or cigarette with your child? Thank you, Sonal ji. Today's chief guest, respected Preeti Gugnani ji, who is district chairman, Anita Singh ji, coordinator Sonal Bhatia ji, doctors, and respect all the district respected doctors and all the other chairmans and all the other beautiful inner wheel ladies. Aap sabko mera pyar bhara namaskar. First of all, thank you PDC Sonal Bhatia ji for including District 311 to be part of such an informative session, Inspire Inclusion for Cancer Prevention. A national webinar commemorating National Cancer Day. As we all know that cancer is the second leading cause of death globally. My topic, as we all know, is what would you do if you find a vape or cigarette with your child? So Sonalji, I would say finding a vape or cigarette with your child can be a nightmare come true for a parent. But in today's world, where there is so much exposure to all kinds of temptation, we must be prepared for this also. Teenagers like to experiment everything and they can easily take up everything like smoking, thinking it's cool. We need to handle this situation with love and maturity, guiding a child not only as a parent but also as a friend. Though everyone knows about the ill effects of tobacco use, like it causes cancer,
and other respiratory diseases. But I feel that we must focus on issues that would affect our child directly. We must stress, firstly, that smoking destroys a child's stamina and he would not be able to perform well in sports. This is very important for a child because at school level, everyone wants to excel in games. Then we should tell the child that smoking stunts growth, that the child would not grow tall or strong. Another important point would be that smoking would have an adverse effect on his studies and his curriculum and concentration. For this, it would be better if we do not lecture the child. Rather, we should sit with the child and Google this together. For it is the fact that nowadays children are very illogical and understand information on Google. Obviously, the child has fallen in bad company, and to get him away from these toxic friends is most difficult. Here we have to be patient and tactful and gently get the child away from this group. For this, we have to monitor our child even more closely. In conclusion, I would say that as parents, we have the duty to guide our children, especially when they are at most impressionable age, so that they can understand the pros and cons of everything and do not succumb to a peer pressure. Thank you. Thank you, Sandhya ji. Thank you. Thank you so much. So, anything? Thank you so much and happy Diwali to all. Have a great day ahead. Please don't leave. Abhi No, I'm not leaving. I'm here. I just wanted to thank you for such an informative session, especially the doctors. It was an eye opener for all of us. Thank you for taking the initiative. Thank you so much. Our next district chairman is Mrs. Sushma Agrawal. She is postgraduate in commerce and she has joined Innerwheel Club of Allahabad East in 2017. She entered as district ISO. My question to her is, next slide, please. What is the greatest concern of a mother when child is ready to leave the nest and go to the professional college? Sushma ji, are you there? Sushma is there. She's there. Okay. Just asking her to unmute. Sonal, can I request you that we can have all DCs together? Actually, I want to say that we can definitely pick up for the marathon, which we are, proposing for 10 January. So we can definitely take up, the doctors who are there, the eminent doctors, Dr. Pavan and Dr. Reena. I mean, all of them, they are really, they were the good motivators and we could really get knowledge from both of them. In fact, 3 doctors spoke right now. All 3 of them were excellent and it is a great motivation, for all of us as an Innerwheel member to, have their guidance and have them as a speaker with us. So we would definitely pick up, ICanSupport with us for the 10 January marathon. I would like to invite them to join us for this marathon on 10 January on the Innerwheel Day. And before that, I want to exit. So I would like to say my apologies. And I would like to say that can the DCs put on their videos on and we can all be seen on the screen once, all the participating district chairmen. I'll just put them on spotlight, just a minute. Hello. Excellent webinar, Sonal, and excellent webinar, Anita. Anita Singh, District Chairman. Excellent initiative. And we are very, very thankful, Dr. Pavan. I'm just putting them. Dr. Pavan, I can see Vishali also, DC Vishali from 30317. Yeah, I'm just checking out. So there are actually. Kindly be on the video mode for a minute. All of
I would request someone, whoever DCs have joined, we can take a screenshot. There are other DCs, please put on your on the video mode so that we can add spotlight. Pavanji, you can take the screenshot. Sir, I am also here, 308. Yes, yeah, Seema ji. yes, please, Seema, switch on the video. Yeah. Others? Anyone else left? Rita ji? No, she's not there. Just a minute. कोई और रह गया क्या? Dr. No, I can't Urvashi, she was Urvashi. here. Yeah, Urvashi. Actually, Yeah. She's Urvashi, having ma'am, if you can put on your videos. Ask to restart. She's not. She's off. She's not. Urvashi ji, if you can put you on switch on the video? No, she's not. Okay, then we can take the screenshot, please, and preserve it. Just take. Yeah. Just a minute. I'm going to do that. It's done. Thank you so much. You can continue Okay. now. Are we ready for the screenshot? Are we ready for the screenshot? Yeah, please. Yeah. So, okay. Say cheese. Let me also come into the screen. Is it okay? Yes, please. Reena ma'am? Yes, please. Okay. Let me also come into the screen. Add spotlight. Reena ma'am, are you there? Dr. I'm there. Ravesh, I'm there. I'm there. Okay, okay. put on your spotlight. So glad to hear you, Dr. Reena. Thank you so much. Thank you so very much. Lovely to have you with us. Reena ma'am, just put on your spotlight. Spotlight. I think I'll just put on the charger because it's running low. It's telling me. Okay, okay. I think it's okay. It's okay. I cannot put more than this. These are the Okay, maximum. that's good then. This is enough. You're there. ICanCaRe is there. Yeah. Okay. So I'm just taking the screenshot right away and say hello. Okay, just a minute. Hi, sir. Okay. Hi, Here sir. Good it goes. afternoon, sir. Yeah, I had it. Thank you. Done. Thank you. Thank you so much. And please kindly share with us. And I'm going to miss the further webinar. So I'll just see it in the recording. I'll hear it in the recording. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time. It was wonderful to have you with us. Really words of Brilliant. wisdom. Brilliant. And it was really, Thank you, Preeti ji. Preeti ji, I just want to tell some few things. The way you have reiterated and everything that you are doing for cancer, it's really remarkable. It's really amazing that someone has picked up all the aspects that is related to cancer, right? Including research. That also you have taken. That also should be a part of your. And what Sonalji has also done. You see, what we are doing is almost 70% of the cancers are because of tobacco. And Sonalji becoming the tobacco marshal leader. This is also a very remarkable thing that she took up. After once we met her, I had met her only once, and she picked it up that this is something that I want to attach myself to for the entire. It was something very remarkable on her part. Definitely, That is something that. Yeah, the passion and the tobacco drive she marshal is has, something I think, which we are doing across India. Yes, I think all our that is district true. chairmen would be And also motivated. something that she wants to. Yeah. So I think a big applause to Sonal ma'am before Preeti ji leaves. Actually, from all the DCs and everything, I hope she really needs a lot of applause for Of course. taking it up. Definitely, definitely, Sonal. And I think you're motivating our thank you. all district chairs and everyone to become the tobacco marshals. Definitely. We can see the passionate spirit with which you have organized today's webinar. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.
So this is the picture that has, I hope everyone is happy with the picture. Can't see it yet. This is समझाएंगे तो क्या मेरे को थोड़ा सा रिमार्क कर दीजिए। अच्छा उससे पहले Sonal ma'am? मेरे दोनों बच्चे दिल्ली में है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, बस भी नहीं करते। My next question to our DC Seema Kapoorji, DC from District 308. My question to her is, what precautions do you take before getting your daughter married? Yeah, thank you, Seema ji. Sonal Bhatia ji, for organizing such a informative session for all of us. Good morning, everyone. And this is very knowledgeable seminar. Thank you for such a very informative seminar, and special thanks to the doctors for sharing your expertise with us and making us aware. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम गोइंग टू गेटिंग मैरिड माय डॉटर, मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि मेरे जो बच्चे हैं, नेचुरली आजकल सब लोग अवेयर हैं तो वैक्सीनेशन तो हम बचपन से ही करा रहे हैं, बट जब 12 इयर्स के हमारे बच्चे हुए तो हमने उनको सर्विकल कैंसर के वैक्सीनेशन उनके पूरे लगवाए, 2 जो थे, एक बूस्टर और एक फर्स्ट डोज। और उसके बाद मैं ये चाहूंगी, अगर मेरा बच्चा लाइक अपनी इच्छा से कर रहा है, उसकी अपनी पसंद है, तो वो इंडिपेंडेंट हो, और सबसे पहले खुद इंडिपेंडेंट हो। और जैसे मैंने अपनी डॉटर की मैरिज करी तो वो इंडिपेंडेंट थी, शी इज एजुकेटेड, शी इज अर्निंग, शी इज वर्किंग, सो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। हाँ, नंबर 2, she should be respected by everyone in her family that is there, and she should respect to everyone, right? उसके बाद हस्बैंड इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जो हम हर एक इंडिविजुअल अपने बच्चे के लिए देखता है, तो दैट शुड बी देयर, एंड वो शुड बी मेडिकली फिट. So I think we should see such areas when we are going to child marriage. So मुझे ये लगता है कि हमें जो भी देखना है वो सबसे पहले यही चीजें देखने की जरूरत है कि हमारा बच्चा जो है वो एजुकेटेड हो और इंडिपेंडेंट हो, एजुकेशन हो और अर्निंग हो उसके पास। तो अगर ये सब एरियाज उसके क्लियर है और वो सब कर रहा है, तो आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम उसकी इच्छा से उसकी मैरिज कर रहे हैं। और अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वी शुड सी ऑल द एस्पेक्ट्स कि उसके घर में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कितने लोग हैं और किस तरह से, क्या इकोनॉमिक लेवल क्या है फैमिली का, फैमिली किस तरह की है, रिस्पेक्टेड फैमिली है। तो वो जो हम जिस समय हम अरेंज मैरिज करते हैं तो ये हर लेवल तरह के हमें चीजें देखनी पड़ती हैं, बट इफ शी इज इंटरेस्टेड इन हर ओन चॉइस तो हमें ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें बच्चे को अपने इंडिपेंडेंट करना चाहिए इकोनॉमिकली, ताकि उसे कोई भी ऐसी चीज फेस ना करनी पड़े। सो दैट इज देयर। सीमा जी, एक मैं और इसमें बात करना चाहूंगी। जब मेरी बेटी की शादी होने जा रही थी तो मैं सबसे पहले ये देखती थी कि उसका जो जीवन साथी है वो सिगरेट और शराब तो नहीं पीता। सबसे पहली चीज। हाँ जी, यू आर राइट इन दैट वे, बट अगर ऐसा भी है और उसकी अपनी पसंद है तो आप सिर्फ उनको एक काउंसलिंग कर सकते हो, और लाइफ पार्टनर जितनी अच्छी काउंसलिंग कर सकता है, इन लॉज या सेकंड पर्सन नहीं कर सकता। तो आई थिंक दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डॉटर और सन कि आप उनको किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, दैट इज देयर। तो वो आपके बच्चे में या आपके जो भी है, गर्ल है बॉय है,
उसमें कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि वो उसको काउंसलिंग कर सके कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। अब मैं एक आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे कि मम्मा, जब बड़े सिगरेट और शराब पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो मैंने उनको हमेशा ये बताया कि बेटा, जब बच्चे न्यू बॉर्न होता है तो उसको बड़े सिलेक्टिव होता है कि 30 ml 60 ml डे वाइज मिल्क चलता है। तो बच्चा छोटा होता है, वो कुछ भी चीज जो हम पैदा होते बच्चे को तो चपाती नहीं देते ना, तो दैट इज देयर। जब आप 25 साल के हो जाओगे तब तक आप नहीं ले सकते, बट तब तक आप इतने एजुकेटेड हो जाओगे कि यू विल नो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है आपके लिए। फिर भी आपको अगर नहीं समझ आए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सेल्फ काउंसलिंग है, जो अपने को पता है कि व्हाट वी शुड डू। अपनी अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी को सिखाने से सिर्फ बता सकते हैं और हो सकता है 100 लोगों में से एक कन्विंस हो, बट जब आप खुद को काउंसलिंग करते हो और खुद को एक चीज बताते हो, डिटर्मिन्ड होते हो, देन यू कैन डू एनीथिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए वी नीड वेल ट्रेन्ड टोबैको मार्शल्स yes in the that is society, there. Yeah, मतलब so that they can protect our children, our women's, our society. और yes ये जो सोशली एक्सेप्टेबल जो हमारा नॉर्म है, हमें वो जो है इसको सोशल आउटरीच बनाना है। वी हैव टू से नो, वी हैव टू ट्रेन आवर इनर व्हील मेंबर्स टू बिकम टोबैको मार्शल्स so that they can protect their lives, their partners, their children from this outrage. Yeah, that is why as inner wheel member also we are doing so in the large scale webinars and seminars in the colleges, in the schools, and general people. We are organizing such kind of events. मतलब focus on tobacco alone would save millions of lives and huge amount of. Very true. Thank you. And thank you so happy much. Diwali to all. Abhi, please don't leave. I'm here. Our next DC who has joined us today is Mrs. Surinder Kaur Monga. She is district chairperson from District 309. My question to her is, next slide, please. Can empowerment and education of women about tobacco lead to cancer and other NCDs prevention? Can inner wheel be the influencer for change? My question to Mrs. Surinder Kaur Monga ji. Sir, is she there? She is there, but she is her video and she's muted. The video is off and she's muted. She's not. It's okay. Let's move forward. Now, my question to all DCs is, influence inclusion for cancer prevention. Whose responsibility? Can we bring the change? I welcome all DCs to answer this question. Anyone who can come forward, please feel free to ask, feel free to answer. Are we all ready to bring the change? Yes, sure. We have to bring change in society because that's a very important, topic of the talk of the term right now. क्योंकि आजकल के ज़माने में mostly everybody is taking the tobacco. Even you can go to any sort of parties right now. Every single person, even the ladies, the small kids, everybody is taking that. Even that wiping device is also there. So everybody is taking that this tobacco and all that. But as a responsible citizen, I can say कि हम लोग को इनिशिएटिव लेना चाहिए सोसाइटी में। कोई भी पार्टी हो, हम लोग को आके बोलना पड़ेगा कि प्लीज दिस इज अ वेरी बैड थिंग। इवन एज अ पैसिव स्मोकर हम लोग को इसको इनहेल नहीं करना चाहिए। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई कैन से we can tell to society this is a very bad thing and we should stop smoking also, say no to the tobacco,
And this sort of initiative we can take by हम लोग जैसे सोसाइटीज में जैसे स्मॉल स्मॉल फंक्शंस करते हैं, सपोज दिवाली का फंक्शंस होने वाला है हमारी कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, तो इस तरह के इनिशिएटिव लेके हम लोग पब्लिक में बोल सकते हैं कि प्लीज दिस इज अ बैड थिंग, say no to the tobacco and do not smoke the cigarettes. So my initiative is like that as a responsible citizen of India, I can say for that. Thank you. Thank you, Rasika ji. Thank you so much. Ma'am, I'd like to share my experience also. We had one webinar or you can say a workshop in school. वहाँ पे उन लोगों से pledge करवाया था कि they will not do it. And उसको फिर हमने follow up भी किया तो सभी saw कि there was a lot of difference. They could understand, they could see the bad effects of tobacco. तो हम लोग इस टाइप की चीज भी करा सकते हैं कि उनको इंडिविजुअल उनके पेरेंट्स को ही बोले कि थ्रू विजिलेंट रहें. Like I also have 2 sons. When they were growing up, I was quite vigilant कि उनके रूम में जाके देखती थी कुछ ऐसी वैसी चीजें तो नहीं है. तो maybe they were too smart कि मेरे सामने कभी हमने उनको पकड़ा नहीं, या they were not into it. But we as parents हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने बच्चों पर भी पूरा ध्यान रखें and tell them the good and the bad effects of everything was prevalent in the society. I have a query from Dr. Pawan. Can I ask right now? Sonal ji, can I ask Dr. Pawan? You can ask. Dr. Pawan, are you here? Yeah. Dr. Pawan, you have talked about the diets, you have talked about the diets, three steps for the diet, I think so. So there's a myth always कि जो non-veg लेते हैं उनकी diet अलग होती है, vegetarian की diets अलग होती है. So can you highlight on that, क्योंकि basically जो non-veg खाते हैं, जो vegetarian diet है. So what sort of diet you can recommend? What is that diet you're about to say about that? कि आपका concept क्या diet के ऊपर? ओके रसिका जी, आपने बहुत अच्छा चीज पूछा, आप मेरे को फंसा दिया एक्चुअल में, ठीक है ना. बट आई एम ए वेजिटेरियन एंड आई एम ए प्योर So I'm वेजिटेरियन. non-vegetarian because I have to, when you talk about the right. So there is always a conflict, whether to take a vegetarian diet or to take a non-vegetarian diet. There is so much of conflict in that, right? But the fact is that the red meat, red meat is something not very healthy, ठीक है ना, उसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए. But if you are taking the other like fish, fish has got lot of omega and oil omega-3, that which is very healthy. Actually, omega-3 and fish oil. Fish oil is actually where it has got lot of cod liver oil and other things. That is all from the fish. So these are all good things to take. But the red meat, उसको हम लोग को ज्यादा नहीं लेना है. So that is a difference in that. The Western cultures, they are always on diet Dr. Pawan, non-veg. Dr. Pawan, can I come in with this? Yeah. And one more query, it is always said कि non-veg जो लोग खाते हैं, whatever, those who eat more than non-veg, उनको बहुत precaution लेना पड़ता है, उनके पास बहुत सारे diseases होती है. So, it's a myth or what is that? मतलब it's ऐसे होता है क्या कि non-veg खाने वालों को ज़्यादा disease होती है? Sure, please. Sure. See, diet is something which is... please. So the question is whether we are having a healthy diet, a nutritious diet, or we having a balanced diet? Are we having a diet which is meant for certain people who have gotten certain disorders or people who are actually into fitness or into sports? So you have and more different... it's a myth always there कि जो non-veg खाते हैं उनको they are more prone to the disease, और जो vegetarian होते हैं उनको disease नहीं होता है, क्योंकि ऐसा myth है. So I want to clarify that concept. There is a thing about balanced diet. So you need to have the vitamins, adequate amount of vitamins, and you need to have adequate amounts of protein, carbohydrates, and depending on what our lifestyle is. So if you're going to have a very sedentary, so all of that has to be balanced with the body composition. So the body composition type, the balance of the activity level, what is that we are participating in? Let us say you are participating in cycling. Suppose you are burning off 2,000 calories in a week. Okay, so if you're burning 2,000 calories a day or you're burning 2,000 calories a week, so your diet can be different. So if you're doing endurance or power, or if you're just doing like you and I, like normal, maybe I'm doing just nothing really. So then in that case, it's a healthy diet. So where we say it's a balanced diet, you can balance it out with the proteins, carbs, vitamins, minerals, and all of that. So taking it in the quantity that we need to take. So diet is all about activity, intensity, and about the body composition. And of course, if there's a disease factor involved. So Reena, actually, what she wants to understand is
It's No, not no, the no. My quality. It's question is not something just the different. No, whether no, you're no. taking protein. Huh. Yeah, Rashika ji, I'm just coming to that. So the very fact that you're taking, see, we can have diet the same amount of calories, same amount of protein and everything with the vegetarian diets. And so many Indians are supposed to be, a lot of them are vegetarian. So your question is whether we can have the same thing from non-vegetarian, right? Yes, non-vegetarian has got high protein content. So even less amount of food can also give us the amount of protein. But the question that you have got, whether it has got some ill effects on our body, right? Yes. That is something that is always a concern, and that is actually what is happening is, this is basically related to our pesticides and other things which gets accumulated into our into the fishes, into the animals which they are taking, the food that they are taking, that gets accumulated into the bone, into the muscles, right? And it has been seen in Japan, in other places where there have been a lot of pollution in the water. The fishes that were taken, they had a lot of pesticides and other things, chemicals, which was deposited in the Doctors are same you can deposited find in the vegetables into their also. muscles and bones, which were taken. But Yes, the so same this thing you're is now finding in the what I was just vegetables coming also. to. The spray So out this there, the is what is pesticide happening. sprays, all are there. You know, the same Milk happened is to the the worst, in vegetables fact. also. The Milk same is really thing. the worst. Yeah. So Rasika, you can call me for the actually, answer. we will talk about this. It's a very See, big topic to be we will discussed. continue to talk about this, Rashika ji. So Yeah. thank So you, there is a lot of thank you. things. Basically, what happens is what we are taking. Yeah. I think we will continue with the short, and we'll finish it off because I have got a lot of patients Thank you waiting. so So, much. Thank you both. Sonal ji, quickly. yes. Thank you so मैं much. मेरा एक्चुअली अपनी डीसी अनीता जी से भी एक क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे कंट्रोल करोगी? मतलब ये जो टोबैको मार्शल्स का जो कॉन्सेप्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, मतलब आप इसको आगे इसको कैसे आप इसको बढ़ा के लेके जाओगे? अनीता जी, माय क्वेश्चन टू यू. जी सोनल जी, स्टार्टेड इन माय टेन्योर एंड आप इसको किस Today तरीके is से आगे लेके जाओगे? टुडे इज कैंसर डे और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं आज से हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए हमें काउंसलिंग की, वेबिनार्स की, इसकी भी जरूरत है, सबके ज्यादा टच में रहने के लिए या ज्यादा दूर तक सबके पास जाने के लिए. इसके लिए आपने मुझसे कहा कि कैसे इसको हम कंट्रोल करेंगे. तो सोनल जी, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा जो कारण है हमारी सोसाइटी में, हमें अपनी सोच को बदलना होगा. क्योंकि क्या है कि जो लोग इसे जो स्टेटस सिंबल मानकर लेते हैं और जो बाकी है वो ये कहकर छोड़ देते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि ये एक मानसिक मतलब इस लेवल से लोग सोचते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता. ये जो मानसिकता है, ये सबसे पहला कारण है कि इसको हमें इस तरह से करना होगा कि यदि कोई इस तरह से ले रहा है तो उसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि ये गलत चीज है. इसे हम अपने स्टैंडर्ड से या हाई स्टेटस से कैसे हम इसको कर सकते हैं, उसको हम ये पैमाना दे सकते हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. सबसे फर्स्ट ये बात है, यदि हमारा समाज जो हमारे यहाँ पे ये ले रहे हैं सब तरह की चीजें, तो उनको गलत नजर, उनके लिए मतलब गलत उनकी धारणा होगी कि ये चीज ठीक नहीं है, नहीं लेनी चाहिए. तब उनपे भी गलत प्रभाव पड़ेगा कि उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हो रही है. यदि किसी को पता चल रहा है कि वो धूम्रपान कर रहे हैं या इस तरह की चीजें ले रहे हैं, तो हम उसको हम कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, होता क्या है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सबसे बड़ा कारण है समाज में कि हम इसको स्टेटस के लिए किस तरह से हम देख रहे हैं. यदि कोई चीज हमारे को नुकसान कर रही है, उससे हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं. वो एक आपने कहावत भी सुनी होगी कि यदि कोई एक मेंबर है या एक सदस्य है, एक नागरिक है, तो कहते हैं ना कि यदि उसको बुरा व्यक्ति बनाना है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि उसको सारा अवगुणों से भरना है, तो उसको सबसे पहले धूम्रपान करना या ये इस तरह से ड्रिंक लेना, ये सब आप उसको सिखा दीजिए. इसके बाद में काफी बुराइयां उसके अंदर खुद ही आ जाएंगी.
क्योंकि उसका पीने के बाद में उसको नहीं पता रहता, या धूम्रपान करने के बाद में उसको नहीं पता रहता, वो इतना हैबिचुअल हो जाता है, नशे का इतना आदी हो जाता है कि वो उसके बिना, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैडम और अनीता जी, फर्स्ट अगर मैं आपसे एक चीज प्रार्थना कर सकती हूँ एज द एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ आई कैन केयर, क्योंकि जो चीज सोनल जी ने शुरू की थी 310 से, मैं चाहती हूँ कि आप इसको मुहिम दे और इसको एक्सेलरेशन पे बिल्कुल पांव रखे और इस चीज को आगे ले चले। पूरी की पूरी आपकी जो है ना द क्लब, वी वांट दैट देयर शुड बी वेरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टोबैको मार्शल्स, और इसकी एक्टिविटी कोशिश, आपकी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं, रहेगी। हम आपसे बिल्कुल मतलब ये मांग रखेंगे कि आप प्लीज इसको लेके अच्छा, चलिए, क्योंकि आई थिंक देखिए, आपके प्रीति गुगनानी जी से आज जो से आज हमें सीख मिली है, दैट जी जी आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सब एक्टिव पार्ट ले। एंड आई थिंक इनर व्हील इतना खूबियत से इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक 310 इज डेफिनेटली गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। एंड एक्सेलरेशन और बिल्कुल, स्पीड की लीवर आपके हाथ आई में प्रॉमिस है। यू, आज हम आपके साथ शुरुआत भी कर चुके हैं। आज थैंक यू सो तो मच। हमारे सोनल जी ने जो हमारी शुरुआत कराई है, मैं तो बिल्कुल आई प्रॉमिस यू, हम आपके साथ थैंक यू आगे सो मच बढ़ाएंगे इस मैडम, मुहिम थैंक यू को। वेरी मच, वी नो दैट। और इसके लिए सोनल जी, मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि हमें हर चीज की शुरुआत, देखिए, जो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, किसी औरों के लिए सेट करते हैं, वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर खुद डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एक पता चल जाता है कि आप औरों से कह रहे हैं कि मत लीजिए, लेकिन पता है कि आप खुद लेते हैं या आपके परिवार में कोई लेता है। ये एक अच्छी बात है कि मेरा परिवार जो है, ईश्वर की कृपा है कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं लेते हैं, तो मेरा बेटा भी, मुझे उसे निगरानी करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने उसकी बातों से ही समझ लिया था कि वो इस तरफ उसका रुझान ही नहीं है। तो मेरे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं बड़ी शान से कह सकती हूँ कि ये गलत चीज है, इसको नहीं लेना चाहिए। इवन मेरे यहाँ पर कितने भी बड़े से बड़े मतलब पार्टी हो जाए, या कितना भी बड़े से बड़ा कोई खुशी सेलिब्रेट हो जाए, लेकिन एक नियम है कि यहाँ पर घर पर ये चीज सर्व नहीं होगी, या आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये चीजें, हमें चीजें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। यदि कोई चीज गलत है, हम किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकते ये चीज। क्यों? क्योंकि यदि कोई चीज गलत है, हम उसको खुद यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसको खुद नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको एज ए गिफ्ट भी कैसे आप दे सकते हैं? तो ये पूरा हमें एकदम मानना पड़ेगा कि जो चीज गलत है वो गलत है। कुछ अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो इस लेवल तक जा चुके होते हैं कि उनकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो इसको लेने के बाद में क्षीण हो चुकी होती है। तो काउंसलिंग की उनको जरूरत वहां पड़ती है, कि कोई ऐसा हो कि जो उनको समझाए कि आपका जीवन अभी भी ठीक हो सकता है, आप इसे छोड़ सकते हैं और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना होगा, और फिर हम दूसरों को भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। अनीता जी, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम, हाँ, सोनल जी, मैं जस्ट गिव मी 1 मिनट। अनीता जी, आपने जो एग्जैक्टली कहा, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉलंटियर एंड अ टोबैको मार्शल, जो मैंने जस्ट ये स्लाइड को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है आपके सामने में। सी देयर इज ए वॉलंटियर, एक 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 जो बंदा है, एनीवन कैन बी अ वॉलंटियर, लाइक एनीवन हु इज नॉट ट्रेन्ड कैन बी अ वॉलंटियर। वो केवल ये कहता है कि तंबाकू खराब है, राइट? लेकिन एज ए मार्शल वन नोज हाउ टू कम्युनिकेट, कितना खराब है, कैसे खराब है, कितना हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम छुड़वा सकते हैं। ए टोबैको मार्शल इज ए ट्रेनिंग which makes a person completely empowered to make a difference in the society, right? So quickly, we have got two biggest marshals in amongst us, Sonal ji and Pravesh ji. Quickly, Pravesh ji, in 3 sentences or 4 sentences, you tell me what, एज ए मार्शल, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ इन योर लाइफस्टाइल इन योर लाइफ, एकदम शॉर्ट में। प्रवेश जी, जस्ट विल लिसन टू यू, एंड देन वी हैव ऋषभ जी हैज मेड ए वेरी गुड ऐप which is a very empowering thing for all the marshals, right? We'll listen to Rishabh ji also. Pravesh ji, just quickly, Yes, sir. Sir, as you already said it, the difference how between the has your volunteer, life changed as a marshal? yeah, volunteer and marshal. So earlier I was a volunteer. I wasn't able to put my thought process strongly, but after having the
this training of tobacco marshal, I'll be able to put my thought towards students very firmly, as well as I feel I have a strong advocacy of towards controlling this tobacco for the student. इस मुझे ये लगता है कि मार्शल होने के बाद we are equipped with the right knowledge, proper knowledge हमारे पास होती है, तो जो सामने वाला है वो भी जानता है कि इसको सभी तरीके की नॉलेज है, तो हमें जो भी जानकारी मिलेगी विल बी हैविंग अ राइट नॉलेज. तो हमें जैसे हम किसी डॉक्टर की बात सुनते हैं या किसी अपने रिलेटिव की बात सुनते हैं, तो हम वी बिलीव ऑन दी थिंग्स दैट इज डिलीवर्ड बाय द डॉक्टर. That kind of things also happens in case of martial. Just for the information of everyone, thank you so much, Pravesh ji. So that makes a person very, very positive, very empowered, and they can actually make a difference in the society. They feel that yes, they are the empowered people in the society. When you put on the badge, like I have put on a badge of a tobacco marshal, when you go into society, it makes a lot of difference. People ask, people think, people start talking about it. And that makes a lot of difference as a marshal. So as a marshal, there will be a lot of things that we'll be giving. We are giving the certification, we are giving knowledge and the empowerment of doing something in the society. So that's the way that we are taking. So quickly, I would ask Rishabh. Rishabh is from IIT Kharagpur, and he is one of the genius IIT, I will say. Make the life of a marshal very empowered, and how it is going to change that person, and how it is going to change the whole system in the society. Quickly, Rishabh. Yeah. Thank you, Dr. Pawan sir. A very warm good afternoon to everyone. So the ICanCaRe application is available on Google Play Store. आप Google Play में जाएंगे और डाउनलोड कर सकते हैं ICanCaRe app को. It's completely free. There is no charge on that. This particular application, we have built an assessment tool. So now we have been over all these webinars, we have been talking about how tobacco is harmful for us and everything. Now, how do we assess that? How harmful it is for the people who are taking it and for the people who are not into it, and how we can prevent them. So there is an assessment section there where we can assess the addiction level. We can assess the signs and symptoms. So बहुत सारे हमको पता नहीं था कि signs and symptoms क्या उभर रहे हैं. तो जैसे आपके बच्चों में या आपके पास में जो कोई भी ले रहा है, तो आप उन साइंस एंड सिम्टम्स के आप से वाकिफ हो सकते हैं, और वो चीजें आप अपने बच्चों में भी बता सकते हैं उनको कि अगर ये चेंजेस आप में दिख रहे हैं तो जरूर आपको बताएं, जरूर एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि उसको एक समय पर ही उस पर इंटरवेंशन किया जा सके. कई बार ऐसा भी होता है कि जो ले रहे हैं वो छोड़ना चाहते हैं. सो दिस एप्लीकेशन कंटेन्स एन एंटायर एंड टू एंड सोल्यूशन टू हेल्प people who are taking tobacco to quit tobacco. So जहाँ पे हम उनके साथ engage करते हैं, we engage with these tobacco users and help them, उनको पूरी तरीके से सहायता करते हैं ताकि वो अपनी इस आदत को completely 100% वो इस आदत को छोड़ पाएंगे. तो जहाँ पे हम उनकी क्रेविंग एपिसोड, विड्रॉल सिम्टम्स, कितना तंबाकू ले रहे हैं, वो सब एसेस करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड देन वी ब्रिंग इट डाउन टू जीरो. टोबैको जो ले रहा है, जब वो छोड़ने जाता है तो उसको कई सारी परेशानियां होती है, तो वो परेशानियों के डर से कई बार लोग छोड़ नहीं पाते. तो उसको आसान बनाने के लिए, वो जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाया ताकि डॉक्टर्स के साथ इन टोबैको यूजर्स का कनेक्शन बन सके, उनको कनेक्ट कर सके, और डॉक्टर्स की सहायता से वो पूरी तरीके से 100% वो इस तंबाकू की आदत को वो छोड़ सकेंगे. सो ऑल इन ऑल इट्स एन अम्ब्रेला ऑफ सर्विसेज, जहां पर सारे कुछ जो कि एक तंबाकू छोड़ने के लिए चाहिए, तंबाकू को फैलने से रोकने के लिए चाहिए, वो सारे चीजें हम इस एप्लीकेशन में बिल्ड किए. तो ये आप एप्लीकेशन आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने आसपास में फैमिली मेंबर्स को, सभी को दे सकते हैं. इस एप्लीकेशन का हमारे टोबैको मार्शल्स ने बखूबी यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है. आप देखेंगे अगले कुछ फ्यू स्लाइड्स में कि कैसे उन्होंने ट्रेन किया, सभी इस अवेयरनेस क्रिएट किया अमॉन्ग द पब्लिक, एंड इस एप्लीकेशन के जरिए वो हम लोग और भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशन टू द पब्लिक, जहाँ पर ये अवेयरनेस और लार्जर स्केल में हम ज्यादा लोग तक भी पहुंच पाते हैं. सो वी सिंप्लीफाइड दिस spreading of awareness through with the help of technology to amplify our reach to the public. So
भी इसको यूज कीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसका फुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन आप ही के लिए ही बनाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू thank the you, usage of this. yeah, thank you, Rishabh. Yeah, thank you, Rishabh. And basically, to put it here, this application has empowered a lot of people who want to quit tobacco, who want to know about tobacco, and specifically the tobacco marshal who want to help people to quit tobacco. So this is a additional thing that ICanCaRe is with. ICanCaRe is training doctors, training people, doing a capacity building, and we through our system that we help the people like marshals to go beyond their level. So this is some of the pictures that I would just like to say the amazing work of Sonalji, that you can see so many Innerville tobacco marshals, right? They are all, I think this was a program at Bulandshahr, and all of them are tobacco marshals, right? And they are doing extensive work. You see all of these programs, a lot of people are doing extensive work. All credit goes to Sonalji, who had created such tobacco marshals in the society, right? They are doing school programs, they are doing some community programs, right? And this was some in a I think this was in a nursing school. So all of these tobacco marshals who have been created, they are doing extensive work. I'll skip the year. And this was one of the largest program that was done. 550 NCC girls were trained in one go at one place. You know, this was all these girls were selected from rural area, picked up from rural districts around Muradabad, and in one place we trained them on one day to become tobacco marshal, so that they can go back अपने area में अपने गांव में जाकर के they can create that environment of being a tobacco free. So you can see Sonalji taking these classes, and all the Innerville members, they have done this girls, and this was presented in the newspaper. Multiple newspapers have been there, and this was another a national webinar which was done empowering women as tobacco marshals for tobacco control. This was a major, and we had all the ministries, people coming from the ministries. We had Dr. Preeti Sudan, she was the secretary at that time of the health committee. The Professor Sunila Garg, we had Paramita Sengupta, who were all professors in major areas. So this was also done with Sonalji. And last year, and this was the teachers, teachers from various places who were trained as tobacco marshals, so that in the schools they will actually do a sustained program in the schools for taking it further. So this is a tobacco marshals program which where we do all the training. It's a course. Basically, when we are talking about the tobacco marshal, what is a tobacco marshal? It is a course. वो एक तरीका है where there is a certification course where a person becomes more and more empowered. Right. So this certification is through a training, which is a 4 hours of training. 8 modules are taught. Certification is given. So there is a small fees attached to it, which is basically to make this thing in a continuous format and make it a sustainable model. So this is a simple model, and this is what we train and teach in this tobacco marshals program. This is in for everyone to understand, and this, of course, we have just learned about these tools, and this is what is a tobacco marshals, and this is type of work we have been doing in the society. These are again young NCC, or I think this was the people who were joining the UP police, young girls who were joining the UP police. So this is what we are looking at. And creating tobacco marshals in the society is a way of doing a extensive work, or doing the biggest work for controlling cancer, and controlling not only cancer but controlling the social aspect of the so much of that is happening in the society. So I would stop here. I think Sonalji, you have done a wonderful job, and in case we open it up for discussion, or do you have to say something else? My one question to you, Dr. Pavan Gupta ji, is that you being one of the eminent onco-surgeon with a prominent group of hospitals, what was your inspiration behind tobacco marshals, and what is your vision behind it? You are actually मेरे को बिल्कुल corner कर दिया आपने, है ना? You had a direct question to me why I have done the tobacco marshal. You see, I am a cancer surgeon, right? एकदम. And every day I see major people. Right now also someone is sitting in front of me who is a tobacco user, and he has got cancer, right? As I said, 70% of the problem in any hospital is because of tobacco, right? Besides, if we actually want to bring a change in the society, अगर मैं
खुद ही कहूँ कि मैं टोबैको को बंद कर रहा हूँ तो मैं अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मैं अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट ही कम हो जाएंगे, राइट। बट दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, कि किस प्रकार से हम अपने सोसाइटी को कंप्लीटली विजुअलाइज, कि हर जगह जगह वी शुड हैव टोबैको मार्शल्स, एवरी प्लेस वी शुड हैव टोबैको मार्शल्स, एवरी हाउस वी शुड हैव टोबैको मार्शल्स, सो दैट एवरी हाउस इज कंप्लीटली टोबैको फ्री। द मीनेंस ऑफ टोबैको, जो टोबैको इतना कंपनीज जो लेकर के आ रही हैं, दे आर डूइंग ह्यूज प्रोग्राम दैट की बच्चे बच्चे तंबाकू के अंदर धस जाए, ठीक है। अगर आप कोई गांव में भी जाओगे, खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन तंबाकू जरूर मिल जाएगा। अगर हम लोग, जैसे आप लोग सभी ने, रसिका जी ने भी कहा, संध्या जी ने भी कहा, अनीता जी भी ने कहा, सीमा जी ने भी कहा, every one of us have to be empowered, every one of us should understand what is tobacco। अगर हम समझ पाएंगे तो हम दूसरों को भी समझा पाएंगे। If I am a winner, I can make others a winner, and this is where this tobacco marshal programs comes in, कि हमें empower होना है, अपने आप को इतना strength बनाना है, अपने आप को इतना strong बनाना है कि हम दूसरों को भी समझा सके। केवल बोलने से नहीं होगा। अगर हम केवल ये बोलें कि तंबाकू खराब है, तो लोग नहीं छोड़ते, बट हमें उनको समझाना पड़ेगा, उनको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। सीमा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी, हाउ टू एम्पावर। इफ वी एम्पावर, वी विल बी एबल टू हेल्प अदर्स। सीमा जी ने बहुत ही सुंदर कहा था, हाउ टू मेक आवर होम टोबैको फ्री, how to make our spouse tobacco free, how to make our relations tobacco free. So I think that is very important. So thank you so much. I will stop here. And anything else that you want? I want to say something. Today, Yeah, we over to all you, have Sonali. come together to raise awareness about the hazards of using tobacco and its relation to cancer. Tobacco consumption is a very serious problem affecting the health of numerous people across the world. It is one of those common issues which can be altogether avoided. Today, we celebrate the strength and the resilience of people who are fighting against tobacco use. We have here the group of esteemed warriors fighting this tobacco menace with us, the entire team of ICanCaRe. The team working in and out with a zeal to protect our fellows and our people from this dreadful disease. They are the very illustrious doctors like Dr. Pavan Gupta ji, Dr. Reena, Dr. Pravesh Singh ji, and entire ICanCaRe team. Dr. Pavan Gupta ji is a prominent oncosurgeon. Despite of this, he is spreading awareness regarding the causes of cancer and tobacco consumption. Innerweal, along with these celebrated doctors of ICanCaRe team, can be the platform throughout which we can save many lives, as this is the largest women organization in the world. We all should fight it off together. We all have to join hands in order to eradicate this social evil, which is not only causing cancer, but it is ruining many families and our own children and our own society. Now it is high time. Our planet is burning. Our people are dying. And untimely death. We need to stop this menace here only. We need to fight off this devil before it engulfs our people, our society, and our planet. Now, it's time to wake up and act before it's too late. मैं आप लोगों से सभी से ये उम्मीद करती हूँ, जो भी डीसीज आज हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीसीज आज यहाँ प्रेजेंट हैं, प्लीज जॉइन हैंड्स विद अस, एंड जिससे कि हम इस तंबाकू असुर, आई मस्ट कॉल इट असुर, बिकॉज ये बहुत ही हमारे बच्चों की जिंदगी को रुइन कर रहा है. मतलब वी शुड ऑल टुगेदर जॉइन हैंड्स टू इरेडिकेट दिस रावण फ्रॉम आवर लाइव्स. दिस इज मतलब प्रेजेंट एराज रावण. 3 to 6 is with you, Sonal Sonal ji. आपका I'm there with you. Thank you. Sika ji, thank you so much, and it's a great. Thank you. Any others? Seema ji, Sandhya We ji, all have to come together. any comments? I'm downloading the app, I've downloaded the app, I'm putting myself as a marshal over there or a volunteer. So I'm putting that app over there. Yeah, I am also trying. That's why I'm busy with my phone. Same with me, I'm opening the app, putting Yeah. myself the beginner We or are whatever it always is there. Yes. Rishabh would be able to guide. Actually, let us I would suggest that let us enroll as a tobacco marshals, so that you will be able to understand the whole thing.
Yes, any questions regarding this? I'll be happy to answer. Right? And I'm actually सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर SK कटियार हैं. He's a pulmonologist. तो he is very much into this tobacco pledge का and बहुत अच्छी वो लोग करते हैं. तो उनसे ही हमने काफी स्कूल्स में एंटी टोबैको ड्राइव करवाई थी. संध्या जी, मैं 2-3 चीजें इसमें जब कहूंगा. नंबर 1, बी स्मार्ट डू नॉट स्टार्ट. दैट इज वन प्रोग्राम दैट वी डू इन द स्कूल्स. वी हैव गॉट द बुकलेट्स एंड ऑल कि स्कूलों में स्टार्ट ही ना हो, बच्चे स्टार्ट ही ना करें. द सेकंड पार्ट इज विन ओवर टोबैको इज इजी. दैट कि तंबाकू छोड़ा जा सकता है. तंबाकू को छुड़वाना कैसे है, दैट इज द स्पेशलिटी दैट ICanCaRe हैज डेवलप्ड. राइट, कि हम लोग किस प्रकार से लोगों को इंटरवीन करें. सी, इंटरवीनिंग इन ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट is what is important. Intervening in together in a standardized format will make a lot of difference, make a lot of impact, right? And that is where we make a difference. Actually, earlier I used to go. I have done 649 schools myself. When it became like कि हम जा करके एक स्कूल में कर रहे हैं, right? But the impact was almost zero. But when we started this tobacco marshals program in the schools, the impact is very high. Yeah. And that is where we can actually, definitely when we have a lot of tobacco marshals across India, we have got a lot of doctors who will do the impact study. Is it actually making a difference becoming a volunteer or as a marshal? What is the difference between a volunteer and a marshal? Right? हम जाकर के स्कूल में बोल दिए, लेकिन उसके बाद अगर हमने इनकम्प्लीट किया तो भी हमारा कोई फायदा नहीं. अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया कि हमें तंबाकू छुड़वा दो, आप क्या करेंगे? How will you help that person to quit tobacco? Dr. Pavan, I also had a query, जब हम लोग करते हैं अवेयरनेस, तो we have to have a 360 degree. याद रखिएगा जी. जी. Dr. Sir, we are always. No, let's listen to Rasika. Let's go ahead. My question is something different. You can carry on. Sandhya ji. Yes, sir. I think कि firstly we have to recognize as such कि हमको experts के पास ले जाना चाहिए to make them aware कि what is the advantages, disadvantages. And फिर उसके बाद हमका स्क्रीनिंग करानी चाहिए या जो भी है. Sanjay ji, let me put it in a very short, because there is a time is running out. So I'll just put it very clear. There is a methodology available. There are medicines available. There is a system available for helping a person to quit tobacco. So that is what ICanCaRe has developed, a 360-degree program where every person who actually needs help to quit tobacco is trained in a scientific way. देखो, एक तो होता है कि एक कसम खा लो, प्लेज ले लो. प्लेज से कुछ नहीं होता. प्लेज तो वो तंबाकू वाला हर बंदा प्लेज ले चुका है, अपनी बीवी का प्लेज ले चुका है, 10 बार प्लेज ले चुका है, ठीक है ना. बट उसके बाद भी वो नहीं छोड़ पाता, राइट? छोड़ नहीं पाता क्योंकि दैट इज साइंटिफिक रीजन टू दैट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. दैट इज वेयर वी नीड टू गेट इनटू. वंस वी अंडरस्टैंड दैट, वी विल बी एबल टू हेल्प अ पर्सन टू क्विट. दैट इज वेयर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट कि पूरा प्रॉपर सिस्टम से हम लोग पूरा को कंप्लीट करें. Right, एक चीज और I feel so that makes a difference. And now when we are doing with knowledge, sir, one thing this is like I felt कि पहले जब हम लोग स्कूल में थे तो we used to have that moral science classes जो हम लोग को अच्छा बुरा के बारे में बताता था. Now we don't have that kind of school में curriculum में होता ही नहीं है. So the kids do not know the difference between the good and the bad. तो थोड़ा सा I feel कि हमारा जो academic courses हैं वो थोड़ा सा they lack into all this. These are also, that is very important thing. ये तो मतलब एक मेजर चेंज के लिए, इवैल्यूएशन के लिए चेंज करवाने के लिए बोलते हैं, जैसे पहले मॉरल साइंसेस होते थे. So I think that's a big thing. But let us focus as a tobacco marshals and let us bring one thing. अगर हम एक चीज को अपने लाइफ में, वही चीज को हम लोग चाहिए. सबसे पहले अपने आप को स्ट्रेंथ करें, अपने आप को नॉलेज बनाए. That is going to make a lot of difference. Yeah, over to Rasika ji. Yes. My question is very, हम लोग how can we reach the Rasika ji, layman आपसे पूछ रहे, person? आप कुछ पूछ. Can you hear me right now? My question is that, Dr. Saab, we are talking about the societies right now. We are concerned about the family, the friends, and what about the person जो villages में है? How can we touch that person? Because basic concept is that वहाँ पर ज़्यादा they need more knowledge over there in the village area, in slum areas, because they are very prone to this tobaccos and all that. So what sort of initiative we can take over there as a marshal? Are we planning any sort of things over there?
बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, बिकॉज आई वर्किंग फॉर दिस टोबैको, तो मैं जैसे नुक्कड़ नाटक है, दैट्स अ मेन थिंग। Definitely. हाँ, सो दिस इज द मेन थिंग वी कैन प्लान कि अपने हमारे एरियाज में वी कैन प्लान स्मॉल प्लेस ओवर देयर, क्योंकि एक लेमैन को नहीं समझ में आता व्हाट इज आवर लैंग्वेज आउट देयर, तो उनको समझाने के लिए वी कैन पुट दैट कॉन्सेप्ट ओवर देयर कि नाटक के थ्रू या कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज के वी कैन टच देम अप कि हाउ टू यू कैन लीव दैट टोबैको आउट देयर। Yeah, Rasika ji, very important thing. अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया at what was that place, लखनऊ के पास में क्या था, सुल्तानपुर, right? We did a program at Sultanpur and we trained 6,325 just imagine 6,325 Anganwadi workers and Asha workers who were working in the villages. Okay. So that they carry this message to their villages. अगर आप ये सोच रहे हैं रशिका जी जाकर के हर गांव में जाकर के कर देंगी, it is not possible. जब मैं निकला था, I started this program way back in 2005-2006, ठीक है ना? So it was at that point of time, it was only me alone doing programs and going to various places. एक साल में मैंने कम से कम 54 प्रोग्राम किए. I got disconnected from my family because हर संडे में कोई प्रोग्राम कर रहा था, right? Then how many people I could reach in 1 year? 54 programs in 1 year. How many people I could reach? Just imagine, not even 5,000, right? But through my program that we did with tobacco marshals, we trained this 6,325 Anganwadi workers and tobacco marshals. They went to the villages and they are now trained and keep calling me. And this was followed by another program. 3 months बाद we did another program which was a screening program. Now trained, they brought 30, approximately 60 doctors, right, for 2 days, 60 doctors. So the reach actually increases. How do we increase our reach? We reach the multiplication of the reach just because of the training that we are extending to the society, right? Yes. If I have chapter 326, right, district 326, do I go personally and do it? I am going to train Rasika, train her other presidents and secretaries. They will get all involved, and once they reach out, and in one day on 31st May, when earlier I used to do maximum 2 programs, 3 programs per day. एक ही दिन में we had 52 programs through Sonal Bhatia. Okay. All her district tobacco marshals, they were doing in one single day. We had 52 programs. In one day, we could reach more than 10,000 people, and at different places of tobacco of Uttar Pradesh. Okay. Right. That is the power of tobacco marshals. That is the power of tobacco marshals. We can create. You see, you've got lot of small movies, right, Facebook page and everywhere, and it's spread out like anything, right? That's the power of tobacco marshals, right? That's empowerment. It's small action. So this is how we are. Tobacco marshal mein, it's a course. This was another point that always people ask, Doctor Saab, aap to ye to course hai, aap to passion se kar rahe ho, then why are you charging for that? Right? We are charging a small fees of 1,450 rupees per marshal, right? This is one thing that always comes to our mind, and also comes to my mind, why am I charging that? When I started, I was never charging, but it became a sustainable model. When I want to make it spread out, when I'm providing them with the books, with the ideas, with lot of materials, that costs, and it doesn't become sustainable over a period of time, right? So when I wanted to make it a sustainable program, I thought that I need to put a small amount. And what happens is, the other thing happens is, the person is also committed towards it. Now they also feel proud. Something that they will pick up from the road, they will have no value. But when they work with us, when we are connected with them, there is we are charging, so a small amount actually makes a lot of difference for us as well as for you, right? Any other questions? Otherwise,
Thank you, sir. Something more has happened. So I am looking forward that all of you will join us Tobacco March of Sonal ji. And Yes, that is what we were charging 1450 rupees per person, but she has made it that we will have one person register and one buddy together. So that means two persons will have the same cost, 1450 rupees for two people. That's a special gift that we are giving to all the Innerville sisters, right? Innerville members, that we are providing at a special, very special cost to all of them. Does it make a difference? Will everyone would like to be part of it? We all have to join hands So, together. and yeah, yes. Can we all switch on the camera, and if there is something that you want to say, anything? Rasika ji, Anita ji, if you want to ask something, Seema ji, Usha Garg. So just switch on your camera so that I will take a picture. Just tell everyone. Yeah, Shushma, Satish, Madhur ji, Anju, Auja, Niru, Shubhi, Ritika, Asha. If you can switch on your camera. Yeah, I'll just take a picture. Dr. Pawan, I am from District 301, Nalini. Yeah, Nalinish ji, namaste. Namaste, sir. I wanted to become that marshal. So nice to see you. I think most welcome. I wanted to become marshal. I wanted that training also. Yeah. Yes. How can we Please do do that? connect with Sonal ji, and we will do that definitely. Yeah, we can do that. So that is a course. We'll have to you just register for the course, and we will be conducting this course probably in the month of December. So all of you who are, I request that Sonal ji will send out the material. Please register on that link, and then we will conduct this course in the month of December. Right. Sonal ji has planned many more things. Actually, in the last year, Nalini ji, we had the Women's Day. So we can also, we are planning for the Women's Day also. I think she doesn't want me to talk about it right now. And so a lot of things are there. So thank you. So all of you, please switch on your camera so that we can just take a picture. Yeah, are we ready? I think डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूर्णिमा जी हमारी पीछे है शायद, यदि वो सुन पा रही हैं। वीडियो ऑफ है। आप कुछ कहना चाहते हैं पूर्णिमा जी? No, nothing, Anita, all good. Yeah, thank you for a good session. Welcome. Yes. So we had the vote of thanks. Anita ji, vote of thanks. Priya is there or not? प्रिया पता नहीं, अभी दिखाई तो नहीं दे रही है। वैसे तो थी, मीटिंग में तो थी वो। If you can carry it forward so that I can leave. प्रिया टंडन मीटिंग में तो थी। Only, चलो ठीक है, आप ही बोल दीजिए। Thank you to everyone. Or you can ask district editor. Reena Goyal is also present. I can see her on the screen. She asked vote of thanks. Reena ji. Reena Goyal. Reena Goyal. District editor Reena Goyal. हाँ, Reena Goyal जी. Reena Goyal, आप? She is gone. नहीं है। रीना जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? I think she is not able to listen. है वो वैसे तो। रीना, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए आप ही बोल दीजिए। चलिए अनीता जी। ठीक है।
हाँ, आज की इस वेबिनार, नेशनल वेबिनार में आप सबने इतना कीमती समय दिया। डॉक्टर पवन जी हमारे साथ हैं और हमारी सारी डीसी जिन्होंने आज हमें यहाँ पर अपना समय दिया और अभी तक हमारे साथ हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने आज हमें यहाँ पे स्पीकर्स हैं जिन्होंने इतना हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। सभी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं क्या इस समय? हाँ जी। डॉक्टर पवन गुप्ता जी जिन्हें हम सुन रहे हैं, और डॉक्टर प्रवेश सिंह जी, डॉक्टर रीना, इंजीनियर रेशम अग्रवाल जी, आप सभी ने इतना कीमती समय दिया और नेशनल वेबिनार के द्वारा आपने सब बताया कि टबैको को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी इस समय हमारे साथ उपस्थित है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय दिया और हमारे साथ आपने इसके टबैको के लिए कदम बढ़ाई, इसको कैंसर डे पर, और आगे हम इसके लिए कार्य करते रहेंगे। जैसा कि अभी हम सबने कहा है कि हम सब साथ रहेंगे पवन गुप्ता जी के और इसको आगे बढ़ाएंगे मुहिम को। तो इसके लिए मैं आप सभी का, और जो आज मेरी फ्रेंड्स डीसी जो मेरे बैचमेट जो मेरे साथ जुड़े हैं प्रमोटर्स, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शायद सुरेंद्र मोगा जी भी हमारे बीच उपस्थित है, पूर्णिमा, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for such an informative session. Thank you. Thank you, Sonal ji. Thank you, District 310 for this Sir, आप beautiful and thoughtful बुला लेंगे initiative. कभी? Thank you so much. all the team. For a very डॉक्टर पवन कहाँ रहते हैं? I am PDC from District 307, Dr. Santosh Gupta. Oh, PDC of batch 92-93. oh, okay. So I was joining this. I enjoyed it. It was excellent. I was thinking of calling you to District 311. Same here in 326 also, Dr. Pavan also. Even I'm interested in a where तो नहीं देखा तो कौन सी आफत आ गई यार? बिना देखे मैंने कहा उसमें से आवाज आ रही तो वही रखा होगा। इसमें क्या मुसीबत आ गई अभी? So please चलिए ठीक है। Thank you so much. It was a very informative and very good takeaway. We are taking so many good information and अभी तक हम लोग काफी अंधेरे में रहते थे. But thank you so much. And Sonal ji, I know साथ क्लब डिस्ट्रिक्ट्स को लेके चलना इट्स अ बिग टास्क एंड बट आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो लगी हुई थी सारा तैयारी करने में। Okay, thank you so much. Thank you, so much. Sonal ji. I can say Sonal right now because she's a very good friend of mine for the last so many years. We started our, career together as a district ISO. So good bonding between me and Sonal. So thank you so much, Sonal ji, for taking this good, beautiful initiative. Very thoughtful. And thank you, Anita. Very nicely done. Everything is so nicely explained by all the three of the eminent doctors. Thank you so much for Okay, bye. taking District 326 be a part of that. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. and बस आगे भी याद रखिएगा। Yes, Anita. Thank you so much. Please think of us also. Yeah. District 318. So we are Seema is leaving. very Thank you. Seema is very serious, है ना? Seema, इसकी कॉन्फ्रेंस आ रही है। इसकी कॉन्फ्रेंस आ रही है इसलिए very serious. I take your leave. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye, Thank you. everyone. Bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Diwali Sonia. to everyone. Thanks a सारी lot. Thank you so शुभकामनाएं। much. Thank you. Thank Happy you, Diwali to all Anita. of you. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali to all of Happy you. Diwali, Anita. Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Bye Thank bye. you so much, everyone. Happy Diwali. Thank All you. of you.